कमीशन उसको कैसे कर रही है? What is your complaint? This is the order of the Provincial Election Commission Punjab. जी सर. आपको कहाँ पेश होना था? पेज 23 सर देख लें. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होना था या पंजाब में पेश होना था? पेश हुए नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पे उन्होंने डिसिप्लिन उसको कैसे Provincial Election Commission पंजाब ओरिजिनल पिटीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 47 है, ये मैंने एप्लीकेशन जाके मांगी विद द प्रेयर्स, पेज 23 of Constitution Petition 47, page 23. अब पेज 23 पर जो चीजें मांगी, सारी पिटीशन तो लंबी है, मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूं जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्रेयर में. पेज 23 की प्रेयर, ये मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन. In the light of foregoing, it is prayed that the ECP pass appropriate orders to ensure that candidates of the applicant PTI, including those presently in detention or who may be detained in future, or those who have been declared proclaimed offenders / absconders, are allowed to file their nomination papers for the general elections and attend to the scrutiny process, including the appeals against their candidature. Khosa Sahab, I want to ask a question to you because this is a contempt proceeding. This is nothing new petition. The original petition was disposed of by this court on 22nd December 2023, exactly. And para 4 contains the direction that you appear before the election commission and they will try to resolve your all complaints. But in this contempt petition, if you will see the title of the petition, you have made so many contemners in this. Besides election commission, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज बहुत सारे कंटेम्नर बने हुए हैं, आईजी के पंजाब के बने हुए हैं, तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो कंटेम्प्ट की है इलेक्शन कमीशन ने, वो थोड़ा सा बताइए ना, उनका कंटेम्प्चर सेट क्या है अगेंस्ट विच यू हैव कम हियर? तो उन्होंने जो एनफोर्स करवाना, that is why I was asking to you whether they have passed any order or not, on after providing opportunity of hearing to you whether any order was passed, any directions was given to the provincial election commissions. हमें कुछ नहीं दिया जी. हाँ, ये हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये जो पेज 12 में पढ़ रहा था, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो यानी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स उसको किस तरह से डील कर रहे हैं हमारी जो कंप्लेंट्स आई. तो वो कंटेम्प्ट, इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मेन पार्टी जो आपके पास है कंटेम्प्ट में है. मैं उसे प्रोविंशियल देख तो लीजिए ना. आफ्ताब अकबर दुरानी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कंटेम्नर नंबर 1. उमर हामिद खान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, कंटेम्नर नंबर 2. नदीम अहमद चौधरी, चीफ सेक्रेटरी KPK, कंटेम्नर नंबर 3. जाहिद अख्तर जमान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब. मोहम्मद फखरे आलम इरफान, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कराची सिंध. शकील खादिर, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान. डॉक्टर उस्मान अनवर, IG पंजाब. डॉक्टर खालिक शाह, IG बलूचिस्तान. अख्तर हयात, IG पुलिस KPK. रिफत मुख्तार, IG पुलिस सिंध. Just to my consumption, because the contempt proceeding is before us. The contemner, the person who has violated the order of this court. So we have to first see who has violated the order of this court. सर, ये आपने इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ 3 में लिखा कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन. पैरा 3 में तो देखे ना, आर्टिकल 218 है. आपने उस पे लौट किया. और this is their responsibility to conduct the fair and transparent election. Exactly. And all authorities हैं, वो पैरा 4 में है. मुझे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा केस. What do you want from us? सर, अगर आप चाहते हैं मैं आपको CD प्ले कर देता हूँ सारे पाकिस्तान में. अब आप प्लीज तकरीर ना करें, आप कानूनी बात कर लें. दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. मैं इसीलिए everybody comes and makes a political statement here. Please tell us, you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. Yes.
Now you have moved a contempt application against IG and chief secretaries who have got nothing to do with the election commission. Election commission is a separate constitutional body. I hope I don't have to tell this to such senior counsel. You've not arrayed even the election commission of Pakistan as a respondent or the individuals. Contempt is committed by individuals. What has the IG police got to do with it? What has got a chief secretary got to do with it? The matter of election pertains to election commission of Pakistan. Yes. And Election Commission of Pakistan is in charge of fair and free elections. What the Chief Election Commissioner has done, or the Election Commission has done, they passed on your Lordship's order to all concerned. Now, when I have moved applications and complaints where my proposers, seconders, candidates, their agents were obstructed and they were incarcerated and they were not allowed to cast their nomination papers before the returning officers, and or on the scrutiny day, the way they were roughed up and they were not allowed, the way the applications have been rejected. And where is the proof of any of this? I have given all that. And where is it? These are just words that you are uttering from the rostrum. Show us some proof. Yes, the CD is here, and CD is there. मैंने CM में जो वन मूव की है, मैंने उसमें सारों के नाम दिए हैं जिनको ने रिजेक्ट किया, जो इन्होंने I don't know why we are doing this. Yes, why we are doing this? Can you please hear us and just hear the question and answer the question? Yes, sir. You have invoked the jurisdiction of this court under Article 204 of the Constitution, yes, which is contempt of an order of this court. Yes. So I don't want a yes from you, just hear us out. My learned brother has said that what order has the Election Commission of Pakistan violated? This court facilitated whatever you wanted, that you will go at 3 p.m. to the Election Commission and put all your grievances there. Now you are saying that the IG police and chief secretary have violated the order. They've got nothing to do with the election. If the order has been violated, it would be by the Election Commission of Pakistan. How does the IG of police and the chief secretary come into the picture? Either you file a different petition. This is a contempt matter. You obtain an order against ECP, you file contempt application against somebody who has got nothing to do with the election. If we issue them notice, they'll say we got nothing to do with the election. This is a matter of Election Commission of Pakistan. Why are you sending us notice? Can you please answer this legal question as opposed to referring to some CD or something like that? Answer the question. You want contempt action taken against individuals. Why? May I answer that? Ji, please do so. My Lord, your Lordship's order was not just a ceremonial order to the Election Commission of Pakistan, reminding the Election Commission of its constitutional obligations and reminding how important a fair and free and a transparent election is, how the confidence of the people of Pakistan has to be conferred. It was not a mere ritual. Your Lordship sent it to the Election Commission of Pakistan. It was meant to be enforced as such. And what was the enforcement? Which is provided under section 184, 185, 186, 187 of the Electoral Act of 2017. They have to ensure that the... Who is they? The Election Commission. Exactly, that's a very question. Election Commission. That's a very question I posed to you, which you have not answered. Please just wait. You are seeking a contempt action against the IGs of the provinces and the chief secretaries. यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे सुन लीजिएगा. आपको फिर मैं अपना अगर मफहूम न समझ. आगे इलेक्शन प्रोग्राम किस पेज पे आपने लगाया है? वो दिखाएं. Without disturbing the timelines in election program. Constitution petition में लगाया है सर. वो तो अलग है ना, वो तो आपकी 47 के अंदर. 47 कितना है? भाई अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया, उसकी अपील फाइल कर दें. सिंपल सी बात है. जी सर. अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है, उसकी अपील फाइल कर दें. जरा ये भी सुन लीजिएगा.
सैकड़ों पिटिशंस ऑल ओवर द कंट्री हुए, नकल भी नहीं दे रहे हैं। नकल के लिए सैकड़ों पिटिशंस, चीज की नकल नहीं दे रहे हैं, वो जो रिजेक्ट किए हैं नॉमिनेशन पे। आपके एक्सेप्ट कितने हुए हैं सर? एक्सेप्ट कितने हुए हैं? हाँ जी, एक्सेप्ट ये जो रिजेक्ट हुए हैं वो नहीं, रिजेक्ट नहीं, पहले एक्सेप्टेंस का बताइए ना, कितने पूरे पाकिस्तान में एनए और प्रोविंशियल मिला के? तो ये जो है वो एनए और पीएस जो टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया है। 668 रिजेक्ट किए हैं और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए। फिगर्स ना आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट? ये मैंने जो CM1 ऑफ 2024 है और मैंने CD लगाई है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आप आपकी जो ये नहीं, पहले मैं ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आप बेशक आर्गुमेंट कीजिए। ये जो आपने लिस्ट भी लगाई है ना सर, ये है टोटल 668 फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हुए। जी रिजेक्ट। अब इसकी जो सोर्स आपके पास आप बता रहे हैं ना, वो सोर्स जो है लास्ट पेज पे लिखी हुई है। आपका पेज जो है 19 पेज 20 पे देखिए सर। The data has been gathered through monitoring of various social media platforms. Yes, sir. ये भी कंफर्म नहीं है आपको कि 668 आपके पार्टी के लोग हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, और पार्टी को अगर ये नहीं पता है कि कितने रिजेक्शन है, और सारा जो डाटा गैदर हुआ है वो हुआ है थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये आपको ये पता है कि 668 कंफर्म है आप? जी सर कंफर्म। तो ये अखबारों में भी आया, ये मेरे पास भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये होगा ना कि जो मीडिया पे आपने सुना है कि फलाना कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो आपने इसमें डाल दिया है। ऐसे सारे कंप्लेंट्स जो है पार्टी के नाम भी इसमें नहीं है। ये देखिए, ये एक जगह तो बड़ी अजीब बात लिखी हुई है इसके अंदर, पेज 9 ऑफ द लिस्ट के ऊपर उनके नाम नहीं है। और जिसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है सर, ये जरा बात तो सुन लीजिए ना, जिसका पेपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है वो अपील कर देगा, खत्म। अपील के लिए उसे नकल लेने के लिए रेटें करना पड़ रही हैं। सर ब्लॉक किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। पेज 9, अब पेज 9 देखिए, पंजाब असेंबली है, ये आपकी CM1 के अंदर है। जी सर। अब ये हाल है कि पंजाब असेंबली के अंदर 273 पे बंदे का नाम नहीं है। मेजर फैमिली, मेजर फैमिली, मेजर फैमिली। अब ये कौन मेजर फैमिली है भाई? बंदे का नाम ही नहीं। से क्या मुराद है? मतलब मेजर साहब को इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेजर ताहिर सादिक ये बता रहे हैं। भाई तो नाम होना चाहिए ना, मेजर फैमिली आप क्या दिखा रहे हैं? मेजर है तो भाई ये ओमिशन है, आप ठीक है, नाम ओमिशन है, लेकिन मेजर सादिक ताहिर ये बता रहे हैं। So you are saying that we should do the job of the election commission? Yes, sir. We should, sir, please, let's please, this is a court of law. ठीक। I mean, if this is to, I don't know what, I don't understand. If someone's nomination paper has been rejected. En masse of one political party. Shall we get the media to put mics here so you can address them? Can we conduct this as a court of law, please? I already listened. Can we conduct them as a court of law, please? I am before the court. No, let's then give us this much respect. If every second statement of yours will be a political statement, then fine. I'm asking a simple legal question. Let me complete the question so you can answer it nicely. There is an election program has been issued. Papers are rejected, papers are accepted. Someone is happy, someone is not happy. Each high court has nominated an election tribunal. You file a rejection thing there. Assume that what you are saying is correct. They're not giving you the order. You file a petition without the order. Say they have not given us the order. ये तो आप ऐसी, don't be so helpless that, oh, they're not giving us order. There is nothing on record. If you saying that we should allow all these appeals without hearing the other side who may have objected to, we don't know what the nature of the objection is. Someone can be a lone defaulter, someone can be, maybe it was wrongly rejected. We don't know all these facts. We have to see every case individually. We cannot say, okay, do not reject the nomination papers of this political party and allow them of that political party. How can we do this?
either you go in contempt or you go, I don't know what sort of petition have you brought before us. It's a contempt matter, and rather than arraying the Election Commission of Pakistan, you've arrayed IG. Well, IG has got nothing to do with the election. It's the Election Commission of Pakistan. I mean, I don't think we need to teach that in the Supreme Court article. Where does this IG police feature in it? Where does the Chief Secretary feature in it? I mean, if you just want some newspaper headlines, fine, you'll get the newspaper headline, but please tell us the law. Does the election held, is it held by the Supreme Court of Pakistan? Is it held by the IG of police? Is it held by the chief secretaries of the provinces? There's a whole constitutional body set up which says the Election Commission of Pakistan. Now, yes, you may have a grievance against the Election Commission of Pakistan, and the law provides for remedies. And those remedies, if the papers have been rejected wrongly, please approach. It's not the Election Commission you'll be approaching the High Court, the Election Tribunal. My paper has been wrongly rejected. Okay, there's no order, right? You'll say they're not giving me the order. You think the Higher Court is so helpless, they cannot call for it? Why have you rejected their nomination paper? I mean, यहाँ करके ये CD हो गई और ये हो गया वगैरह हो गया. Let us get. We are trying to push through democracy, but every day we come across people not wanting to go into election. But you are standing behind every political party for election. We have repeatedly said so. And you are bringing here IG police को, चले हम उसको नोटिस कर देते हैं. IG आज कर देंगे नोटिस, कंटेम्प्ट, उसके खिलाफ हम चार्ज फ्रेम करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. आप देख क्या करें, ऑर्डर हमें बता दें, ये ऑर्डर कर दें, आज हम कर देते हैं आपके लिए ऑर्डर. खुले हुए दरवाजे, अभी भी टाइम है. Why you wasting time? Go and file appeals against your rejection of nomination papers. Each case will be decided on its own merits. कोई वो अलाउ करेंगे, शायद कोई डिसमिस करें, I don't know. फिर आप शायद हमारे पास आ जाएं, फिर हम उसको देख लेंगे. राइट ऑफ हियरिंग दिए, इनको नहीं दिए इलेक्शन कमीशन ने. आप अगर सुनना पसंद करेंगे, मुझे 55 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए. अच्छा सर, ये बातें ना करें ना, तो मुझे जरा सुन लीजिएगा. अभी क्या कर रहे हैं हम आपको, आप हमारे सवाल के जवाब भी तो यही पूछ रहे हैं. आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. नहीं, एक मिनट. राइट ऑफ हियरिंग जो उस दिन 3 बजे था, वो आप बताएं ना. इलेक्शन कमीशन वालों ने सुना है इनको. ECP को बुला लेना जरा, एक मिनट, पता तो चले ना कि जरा पेज 12 पर रुक जाइए सर. कंप्लायंस के तक ये आए थे 3 बजे आपके पास, और हमने रिपोर्ट भी कंप्लायंस सबमिट की. नहीं आए थे, हियरिंग हुई थी. बिल्कुल सर, वी हैव सबमिटेड. आए थे, मीटिंग हुई, इंस्ट्रक्शंस हुई, डायरेक्शंस हुई टू ऑल द रिलेवेंट क्वार्टर्स, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड सर. इनके ये जो रिजेक्शन के अलावा इनके एक्सेप्टेंस का आपको पता है कितने हुए हैं सर? ये अभी डेटा है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का नहीं, टोटल का है सर. लेकिन ये अभी तो दैट विल बी डिसाइडेड बिकॉज द पार्टी पोजीशन विल बिकम क्लियर आफ्टर ऑन 13th of January when form 32 is drawn. 13 जनवरी को क्या होगा? सैंपल अलॉटमेंट होगी, तो इट विल. ये रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स की अपील का तारीख कब तक है? आज आखिरी, आज आखिरी 10 तारीख तक. आज आखिरी है कि दायरगी की, और 10 तक फैसले करने हैं. 10 तक फैसले करने, आज आखिरी है दायरगी की. तो सुन तो लें जी. 3 तारीख, today was the last date for filing nomination papers, appeals, and 10th of January is the last date for deciding the appeal. तो अभी वक्त है. आज. So why you here in the Supreme Court? You should go and file appeals before the tribunals. कुछ अपीलें फाइल Why you losing your right of appeal? रिजेक्शन ऑर्डर के लिए सारी रिटर्न हाई कोर्ट्स में जरा देख लीजिएगा कि फ्लड ऑफ रिट्स पिटीशन फाइल हुई. सर एक चीज मैं अर्ज करूं, जरा पेज 12 पढ़ लीजिएगा. आपका ऑर्डर था कि स्मूथ और फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंसी में. हम क्या चाह रहे हैं? हम भी तो चाह रहे हैं ना यही हो. हम कब कह रहे हैं कि ना हो स्मूथ, जब आपको एक फोरम मौजूद है. व्हाई यू नॉट अवेलिंग ऑफ द फोरम? वो मैं करूंगा, वो तो मैं कर रहा हूं. जैसे आपने अभी फरमाया कि बगैर पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना. ये जरा पेज 12 पे पढ़िए जरा. मेरी ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह, ये इलेक्शन कमीशन का अपना एक डायरेक्शन है टू द IG एंड चीफ सेक्रेटरी. ये जरा पढ़ लें पेज 12 पर. और माय क्रिमिनल ओरिजिनल ये लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिख रहे हैं, ये जो है इलेक्शन कमीशन वाले. विद ग्रेट कंसर्न
I have the honor to state, to bring into your kind notice that this office is flooding. This office is flooding with numerous kind of applications, almost from every district, as well as the media reports circulating that the candidates, particularly belonging. इस खत का इस केस से क्या ताल्लुक है? इसी से ताल्लुक है, इसी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इन्होंने जो बकौल इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं उसका ये असर हो रहा है। जरा सवाल तो खत्म होने देना। आपका हमने जो ऑर्डर पास किया 22 दिसंबर का ऑर्डर था, ठीक है? ये 22 दिसंबर का ऑर्डर था टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कोई खत आप पेश कर रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का खत जो 24 दिसंबर का खत है, तो यकीनन इस ऑर्डर से इसका ताल्लुक है ही नहीं। है, बिल्कुल है। इन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट पर इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को और डिफरेंट चीजों को। आपकी कंप्लेंट किधर है इलेक्शन कमीशन के सामने? आपकी कंप्लेंट कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफिस में इधर दो कॉपी नहीं है हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट की। आपने कहाँ फाइल की है? चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी भेजा। ये किधर, ये आपकी कंप्लेंट किधर है? टू ईसीपी कंप्लायंस रिपोर्ट दिखाऊंगा। हमारे पास नहीं आई है ना, अभी दे रहे हैं, देखते हैं क्या कंप्लायंस की ऑर्डर दी। वो मैंने जो है पेज जनाब को बताया था उस पर है, वही हमने भेजी थी। पेज 23 प्रेयर है और वो शुरू होती है मेन पिटिशन में। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 47 में ये शुरू होती है हमारी कंप्लेंट। पेज 13 से शुरू होती है, पेज 13 से लेके पेज 23 तक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन 47 में। और अब अगर इनके अपने चीफ इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी को। I'll ask the question again. You have sought contempt action pursuant to the order dated 22nd December 2023. In this order, in paragraph 4, it was stated the petitioner, or for that matter, any person representing any other political party in the electoral process may approach the ECP today at 3 p.m. for the redressal of their grievance relating to the election. Where is that application of yours to the ECP? ये उसकी पेज 13 से लेकर पेज 23 तक है in the CP Constitution Bill 47, 13 से 23. May I read the whole or may I read the last? I don't know which file number. Tell me the file number. This is Constitution Bill 47, 23. 13 से शुरू होती है तहरीक-ए-इंसाफ बनाम वर्सेस द फेडरेशन एंड देन द इलेक्शन कमीशन। ये पेज 13 पे। ये तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इसको आपके पास कॉपी मिली है? ये तो उन्होंने कंप्लायंस की है ना, ये जो ऑर्डर की जो कंप्लायंस है ये किधर? ये तो पहले की बात है ना, उसके बाद का ऑर्डर के बताएं बात। ये ऑर्डर तो इनके पास होगा, ऑर्डर इन्होंने मुझे कोई नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। हम तो थक गए सवाल पूछ के, अब दोबारा सुन लीजिए सवाल। सर, इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेश। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं पेज 14 से सीपी में। I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. मैं करता हूँ सर, इनका जवाब भी मुझे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर आप आपका कंप्लायंस रिपोर्ट में खोसा साहब पेज ये दिसंबर 26 का लेटर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। इनको दिखाएं खोसा साहब को। इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर लिखा है दैट आफ्टर द मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ पीटीआई The Commission taking immediately notice has issued instructions। सर ये मोटी वाली किताब में पेज, इसका पेज नहीं है, तीसरे नंबर पे ये पेज नंबर नहीं डाले।
Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are Annex E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. ये election commission ने कहा है. ठीक है, ये ठीक है. और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है. कहा उन्होंने और पेज कर दी उन्होंने. मैंने अपनी जो पिटीशन क्रिमिनल ओरिजिनल लगाई है उसके पेज 14 से ऑनवर्ड्स मैंने लगाई है. इनकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने नीचे भेजी प्रोविंसेस में भेजी. ठीक है सर. अब ये प्रोविंशियल इसीलिए मैं पेज 12 पे पढ़ रहा था. ये 132 से शुरू हो रहा है इसी पेपर बुक में जो इन्होंने अभी दी है ना कोर्ट में. इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इशूड हुई हुई. ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है. लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें. उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी हमारे कैंडिडेट्स को उठा लेते हैं. पुलिस बाहर कार्डन ऑफ करके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिसर्स को ब्लॉक कर देती है. कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जाने. शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होगी ना. पे पढ़े, यही तो मैं कर रहा हूँ. ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है? वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें. तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें. अब ये देखें पेज 12 पे जरा काइंडली रीड, बे विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ. विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है. With great concern, I had the honor to state to bring. I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now, if you are saying, नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक. आप प्लीज ठहरें, मुझे नहीं मिली है ये. आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना. अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए. अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस सुनिए, हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस. ये 200 सफ़े में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा. नहीं करें साहब, अब आप इतना किया और कर लें, कोई फर्क नहीं है. हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे. आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं. अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा. कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना. अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं. क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं. अब आप देख, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है? इन्होंने क्या किया है? हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है. लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs, ROs सबको इशू कर दिए हैं. अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है. ये अखाड़ा नहीं है क्या? किसकी आवाज भारी है? आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें. आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना. चलिए बोले. पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे. पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया. दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं. उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस. अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना. हमें सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिखे. अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है, ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा. आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज.
With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा डेट आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी 24 दिसंबर है कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए 24 ये वही तो इन्होंने उसी दिन नहीं आप पढ़िए ना प्लीज डेट ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें उसकी है 26 दिसंबर तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना उसके बाद की भी मैंने इसके 26 के बाद की कोई बात बताएं 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी ठीक है अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो बता दीजिए मैं आपको सीडी भी चला के जरा देख लीजिएगा और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ चलें अच्छा करते हैं आप इट्स सिकनिंग अदरवाइज लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था वहाँ हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी वो पूछते थे आप किसके हो तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी इनके 26 के बाद भी यही हुआ ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है लिखी है कहाँ लिखी है ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं लिखी नहीं कहीं आपने सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे नहीं क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा लिखा यही है और क्या किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ ये जरा मुलाहिजा कीजिए मेरी ग्राउंड्स उन्होंने यहीं से किया ये देखिए दैट डिस्पाइट ये पेज कहाँ से पढ़ने ये पेज 3 the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds यहाँ grounds मैंने लिखे पेज 3 के last paragraph that despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. तो अंग्रेजी है ये उन्हें कंप्लायंस कर दी है ये देखिए ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है आपकी जुरिस्डिक्शन आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को ये आपने क्या किया जी सर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले या इनकी ग्रीवेंस देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड वी हैव टेकन every steps to ensure that their nomination papers are accepted and the RO has confirmed the summary says so खोल के देखिए क्या चीज है ये समरी लगी है सर नहीं तो आपको नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए सर वो ये अभी once the RO finalizes these जो वाइस पे हमने लगाई हुई है हमने लेटर भेजा ये पार्टी वाइज नहीं है सर देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स सिर्फ यहाँ जमा करा के रिपोर्ट की है हम नहीं इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप कंप्लायंस में सर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों सर वी डिड इंश्योर ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें कंप्लायंस वही है जो हमने लेटर लगाए हैं कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं नो सर मैं आई रीड इट सर ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके नेक्स्चर्स हैं इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 90 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary ये समरी लगी तो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना रिटर्निंग ऑफिसर से आप रिपोर्टें मांग रहे हैं खड़ा हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए उनको क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन we did issue direction to each and every corner आप आईजी को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस वो हाई हैंडेडनेस करता है आप क्यों नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन के ताबे इस वक्त सारी चीजें मशीनरी जो है दे हैव टू स्टैंड विद यू
They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section Article 204 with regard to the Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is enjoyed. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant. Here the very state is at stake if the elections are not held freely and fairly. ये जो समरी है तो 31 लोगों के लिए ना 31 फॉर्म सर जितने भी आए थे सर उनको हमारे पास ये आए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया सर जितने भी साथ साथ आते रहे द कमीशन टुक स्टेप्स एंड फॉरवर्डेड इट अकॉर्डिंगली एक आदमी राजनपुर रुझान और बक्खर और सक्खर से तो नहीं आ सकता यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास लेकिन वो तो वहीं करेगा मुकामी तौर पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर मैं वही लेटर आपको प्रोविंशियल इलेक्शन और इन्होंने जो अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट में लिखा है इन्होंने वही लिखा है कि वो लेटर आपकी पूरी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पढ़ ली है उसमें आपने कोई एक स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं लगाया आपने बस जनरल बातें की हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन वी कंप्लीटली एग्री विद दिस वी 100% एंडोर्स इट यू हैव नॉट मेड एनी एलिगेशन I mean what are we doing here sending people for contempt you have just made yes this court has fixed the day, ensured the date for elections is taken fixed. This court is trying its utmost not to disrupt the election process. But where is there any specific allegation? Make a specific allegation. All it is, it's just general words. The election commission is under a constitutional duty to conduct free and fair elections. Yes. Under Article 218, yes. That, sir, you just saying these general बातें कर रहे हैं, तो कोई specific बात हो तो हम उसको देख सकें. So where is anything specific? But, so what you, we can, unless you want us to substitute ourselves as the Election Commission of Pakistan, that we should hold the elections ourselves. वो भी हमने करके देख लिया कि जो फिर क्या हुआ था उस इलेक्शन में जो आपने जो एलिगेशंस लगाए थे एंड फिर हम सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त ज़ाया किया और फिर वो मालूम हुआ कि कोई भी सब्सटैंशिएटेड एलिगेशन नहीं थे 35 पंचर वाली जो बात इसी कोर्ट में हुई थी उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बेज़ाब्तियों का अनफर्ल किया था अगरचे और हर चीज मुस्तरद हुई ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने हर चीज मुस्तरद हुई ऑर्गेनाइज्ड हर चीज मुस्तरद हुई ठीक है ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने कहा नहीं है लेकिन इरेगुलरिटीज उन्होंने 47 स्पेल आउट की थी उसमें भी यही हुआ था आपकी इसी को भाई हम तो जजेस नहीं थे ना मैं ये नहीं कह रहा आप जो भी जजेस थे उस वक्त उन्होंने ये डिटरमिन किया आपने कोर्ट का बेतहाशा वक्त ज़ाया किया आपने और कोर्ट ने आपके सारे एलिगेशन मुस्तरद कर दिए कोई कंपैरिजन नहीं है उसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं आज जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में आप देख लें जरा ये खुद चीफ अपना इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेल आउट किया है 12 पे जो मैंने अर्ज किया इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं अपॉइंट किया है ना आप ही ने अपॉइंट किया मैंने नहीं किया ना तो आप जो बातें आप देखिए कोई पाकिस्तान में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है बस क्यों नहीं प्रोएक्टिव इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है इलेक्शन कमीशन और इनको अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इससे ज्यादा डायरेक्शन हम क्या दे सकेंगे 22 दिसंबर का ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हो ही नहीं सकता है बिल्कुल ठीक है और उस पे अगर इन्होंने हमें टाल मटोल की होती we would have taken them to task तो नहीं किया ना अब आप सुनते नहीं ना तो हम आपको सुनते हैं आप बात करते हैं खामोशी से वो बात कर रहे थे आप उनको भी बार बार मैं तो आपको ही सुने जा रहा हूँ कब मैं बोल रहा हूँ आप ही बस बोल रहे फिर आप बोल रहे हम चुपचाप बैठते पुराने स्टाइल में वो 12 वो पेज पढ़ ले Whenever you finish, you tell us. 12 पेज पढ़ लें 12 पेज आप बात समझने की कोशिश करें मैंने समझ लिया 24th of December this report is dated 26th of December कंप्लायंस रिपोर्ट में रेफर किया ना उसमें इन्हीं का रेफर किया है कंटेम्प्ट पिटीशन में आपकी 2 पेज की प्रेयर है आप प्रेयर पढ़ें वो कंटेम्प्ट में आती हैं मतलब आप कह रहे हैं कि जलसों की इजाजत दें रैलीज की इजाजत दें यानी कंटेम्प्ट तो सिर्फ इस चीज की कंटेम्प्ट है कि ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस उस हद तक कोर्ट देख सकता है कि जी हमारे ऑर्डर को वायलेट किया है तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फेस द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगर आप अपनी प्रेयर क्लॉज पढ़े ना पेज 6 से 7 पे
तो आप तो इसमें ये भी कह रहे हैं respondent number 2 may kindly be directed to take against the culprits under section 55, 184, 186, 187 and 188 of the election act. जिन्होंने मेरे proposals को उठाया है, जिन्होंने मेरे seconders को उठाया, तो सिर्फ उस ऑर्डर की हो रही है ना. हाँ, आप इसको नई पिटीशन के तौर पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है. This is not a fresh petition. This is only the proceedings of contempt, which can be initiated against the alleged contemptor if you will make out the case of contempt. सर paraphrase of time है shorten. My lord, our chief justice साहब ने कहा कि ये we will not countenance any delay in the election. I don't want to be privy to that at all. आपने मेरे वकील को भी contempt notice दिया, so I can't take that risk of going to the high court because I don't want to in any manner whatsoever. I don't want the deferment of the election even for a moment. Prayer clause तो आपकी main जो petition जो यहाँ लगी होगी उससे भी beyond the scope of that. सर इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ 2 पेज की सर आर्टिकल सेक्शन 184, 185, 186, 187 जो भी पकड़ता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को जो भी डिनाई करता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन. Why is the election commission sleeping over it and privy to? Because you've not filed a single complaint. Sir, we are asking you repeatedly, show us your complaints that you filed before the election commission. Election commission will, if it doesn't entertain your complaint, it's a different matter. They have implemented our order. Now, if you have a complaint, you should show us, this was my complaint, this was left unattended. Latif Khosa sahab, I think you should speak, and I don't know, you don't let us talk at all. Yeah, it's the other way around. Sir, as an officer of this court, मेरी तो ये ट्रेड में ही नहीं है कि मैं किसी obstruct करूँ. नहीं, ये contempt में compliance होनी है ना, compliance ही तो. अब आप इनको अगर शिकायत करेंगे कोई जो कि बार-बार हम आपसे कह रहे हैं, because हमारा तो ये contempt proceeding है, इसके अंदर हम बुला के किसी को कहें कि तुम contempt proceeding face करो, charge face करें. Level playing field दे दे, level playing field सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि level playing field आप नहीं दे रहे हैं, इनको बताइए. बिल्कुल दे रहे हैं सर, एक मिनट, एक दे रहे हैं सर 550 पूछ लेना उनसे, एक मिनट बोलने दीजिए ना उनको. सर मैं सवाल किया है, जवाब तो देने दीजिए. सर विद योर परमिशन सर, ये जो अभी दोबारा रिपोर्ट दी है इसमें एज मनी एज 23 यहाँ हजारों की तादाद में हो रहा है. 30 complaints so far commission has received on record, and every complaint has been sent to the relevant quarter, even up to the level of the RO, to keep their offices open and accept the receive the nomination papers and decided according to law. There is an index, sir. There is a summary. And it is on the record, sir. Sir, ये जो फरमा रहे हैं para 3 मैं पढ़ देता हूँ. As you know that filing of nomination papers as per election schedule issued by the ECP is concluding today, while the receiving and filing of nomination complaint has been sent to the relevant quarter. Intimidation, snatching of nomination papers, and other such acts in the hands of the police. In this way, the candidates are being discriminated against, as conducive environment is not being provided to all without any discrimination, December 2023, and unhinderedly. But the discouraging aspect of the situation, as mentioned above, is so that the returning officers, who mostly are from provincial / federal executive, are not acting in a proactive manner as the electoral laws demand from them. They seem unable to control the situation even inside their office premises by making it conducive for all the prospective candidates to attend their offices unhinderedly, without from intimidation, any discrimination for receiving and filing of their nomination papers uninterruptedly. Para 4, as you also know that all the executive authorities are bound to assist the Election Commission of Pakistan in the conduct of elections in a fair, free and transparent manner as stipulated under Article 220 of the Road with Section 5 of the Elections Act 2017. But contrary to this, the concerned administrative authorities, including DRO, ROs and other functionaries working under the administrative control of the provincial government, are not rendering the requisite
assistance as required of them under the quoted provision of law to provide, and hence is the clear violation of constitutional provision as well as of the provisions of electoral laws and directions instructions of ECP 2. Foregoing in view, it is therefore requested kindly to intervene in the matter by issuing strict directions to all concerned under your administrative control to act proactively, effectively and promptly to provide a conducive environment at the premises of the RO's offices so as all the prospective candidates could file their nomination papers of ease without any hindrance, fear and intimidation. Besides, necessary direction may also be issued to all deputy commissioners and other administrative officers under your kind control to control the situation within the premises of their respective offices and take strict and stringent actions against any officials of any department who is intervening and impeding the nomination process, creating hurdles for the candidates in receiving and filing of their nomination papers. Your personal attention, intervention and your timely response in the matter to control the situation is requested, which shall be violated highly. अब इसमें जितने हमारे रिजेक्ट हुए हैं उसमें 90% है कि जी प्रपोजर सेकेंडर इनके हाजिर नहीं आए, कैंडिडेट हाजिर नहीं आया। अब ऐसे में जब आपने ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस खड़ी की हुई है, जब पता करता है तो आप उठा लेते हैं और उनके खिलाफ 216 के उल्टा पर्चे दर्ज कर देते हैं। Even lawyers were incarcerated and the bars had to intervene at places. My own son was arrested. Forget, अच्छा नहीं लगता personal बात करना, but nevertheless this is what is happening around. Can anybody shut his eyes? Lord, this is the worst type of pre-poll rigging ever in the history of Pakistan which is taking place. अगर आप इस तरह से कहते हैं कि ये level playing field है, तो then why hold the elections at all? फिर अगर ये इस तरह से करना है कि ये की obstruct कर देना है और ये सारे एक किसी और पे क्या किया जी? आपके ये पेज 12 पे जो खत है आपके पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन, provincial election commissioner, sir, this strengthens the stance of the commission. The provincial election commissioner has issued direction to the chief secretary and inspector general of police to ensure level playing field and to लेटर किधर है जो लिखा आपने? सर लेटर किधर है? ये ना सर, नहीं ये तो 12 तो ये तो प्रोविंशियल डायरेक्टर कमीशन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने खत लिखा है ना। तो उसके बाद इसकी कंप्लायंस चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या करनी थी, उनको खत लिखा है ना कि आप देखें इस मैटर को, ये प्रॉब्लम जो है। तो 24 का लेटर है, 28 को हमारे किसी को नहीं जाने दिया गया, 90% रिजेक्ट हुए हैं कि आपका प्रपोजल सेकेंडर है, 29 को नहीं जाने दिया, 30 को तशद्दुद किया है। वो जरा देख ले सारे प्रोविंसेस में क्या हुआ है, ये 24 के बाद की ऑर्डर लेटर के बाद। सो देयरफॉर आई वाज सेइंग कॉस्मेटिक किस्म की जो है लेटर लिख देना काफी नहीं है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जो खत लिखा है तो उसके ऊपर कोई कंप्लायंस की है चीफ सेक्रेटरी साहब ने? सर ये समरी जो लिखी है ये 24 इस पे है सर, 25 का एक लेटर है समरी के पेज 3 पे सर, ये ऊपर लगाया है। इसके कंप्लायंस पूछ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लायंस की है, कोई उसमें कुछ इकदाम किए हैं? 24 दिसंबर के लेटर के जवाब आईजी को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, ये दो को लिखा है। ना आईजी ने ना वहां से पुलिस हटाई, ना वहां से चीफ सेक्रेटरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कोई हिदायत दी, दोनों ने विद इम्प्यूनिटी उठा के तो जो है सारे अंदर कर दिया। क्योंकि इस लेटर की कॉपी तो आपको भी आई है ना, सेक्रेटरी उन्होंने मार्क की है ना, इंक्लोजर के तौर पे आपको भी मार्क की है ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हम सर रिकॉर्ड से देख लेंगे, लेकिन इसमें नॉमिनेशन पेपर्स वर स्मूथली देन फाइल्ड और इसका रिकॉर्ड है, हमने भी उनको भिजवाए हैं सर। ये समरी अगर आप देख ले 26 को भिजवाए हैं, 27 को भिजवाए हैं, 28 को भिजवाए हैं। इवन मतलब ये टिल लास्ट व्हेन एज एंड व्हेन देयर कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड देयर इज समरी एंड देयर इज अ रिपोर्ट दैट एक्शन has been taken, sir. Your allegation is against whom? Sir? Ji? Sorry, sir. Your allegation is against whom? My allegation is that the election commission is against whom? Respondent number 2, respondent number 4, respondent number 7. 2, 4 and 7. Give the name. Who are these? Yes. 2 is the Umar Hamid Khan. Sir, Umar Hamid Khan, Secretary to the Election Commission. 4 is the Chief Secretary Punjab. And Umar 7 Hamid is Khan is supporting you. 7 is the IG Punjab. Umar Hamid Khan is supporting you. Very many letters. Sir, but he is supporting you. Okay, fine, sir. मैं तो कहता हूँ proactively करें. It is not Umar Aslam Khan who is obstructing. It is the IG and the Chief Secretary who the subordinate staff. Not even personally the IG or the Chief Secretary.
So you only have problems with Punjab? نہیں سر باقی چیف سیکرٹری جو آپ نے خط بتایا وہ تو آپ دیکھیے ایویڈنس پنجاب کی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ایویڈنس میرے پاس پنجاب کی ہے, پھر آپ باقیوں کی میرے پاس اور باقی الیکشن کمیشن کی جہاں تک نان کمپلائنس ہے وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خود خط لکھ رہے ہیں, انہوں نے کیا ہے, ہمیں ٹائم تک بلایا ہے, 3 بجے ہماری ہیئرنگ بھی کی ہے, انہوں نے خطوط بھی جاری کر دیے, کمپلائنس بھی کر دی. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, اب رہ گیا آپ کا یہ پنجاب کا, بیکاز ڈیورنگ کورس آف یور آرگیومنٹ یو اونلی پوائنٹڈ آؤٹ only this letter page 12 وہ آپ نے ریپیٹڈلی بتایا کہ پنجاب میں یہ ہوا ہے, تو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہے جی کوئی موجود اس سب میرا صرف سبمیشن یہ ہے, مائی لارڈ دی چیف جسٹس از رائٹ, میرا سبمیشن یہ ہے کہ یہ صرف ریچول سے آپ ایک لیٹر لکھ دینے سے کام نہیں بنے گا. یو ہیو ڈائریکٹڈ دی الیکشن کمیشن ٹو انشور آل دس ڈزنٹ ہیپن واٹ از ہیپننگ ان پنجاب. یہ اب آئی جی کو اگر فری ہینڈ دے مل جاتا ہے, چیف سیکرٹری اگر ڈیفائنس کرتا ہے, دیر آر پروویژنز ان دی لا اٹسیلف ویئر بائی دی آئی جی اینڈ دی چیف سیکرٹری کین بی ٹیکن ٹو ٹاسک بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. دے شوڈ بی رادر ٹیکن ٹو ٹاسک because the entire edifice of the state depends on that. بھی نہیں ہے. Did you move an application before the ECP to do so? Yes sir. اس میں میں صرف ایک گزارش کروں سر, میں اس دن آرگومنٹس ہمیں آنریبل سپریم کورٹ نے بھیجا تھا. An application to the Election Commission of Pakistan to take action against the IG or Chief Secretary of Punjab. پروونشل الیکشن کمشنر نے لکھا ہے, مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو خود لکھ رہا ہے پروونشل الیکشن کمشنر. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, جواب ہی نہیں دیتے ہیں, کیا کریں ہم؟ تھرڈ ٹائم میں سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں لکھا, ہم نے نہیں لکھا. تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن خود لے رہا ہے, پروونشل الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے کہ دے فلڈنگ کمپلین. دیکھیں جب یہ 12 تاریخ کا خط آپ کو بھی آیا ہے چیف الیکشن کمیشن کو پنجاب کی طرف سے, تو اس کے کمپلائنس آپ کو بھی دیکھنا چاہیے, آپ اپنے لیول پہ دیکھنا چاہیے تھا آپ کو کہ چیف سیکرٹری کو خط لکھا, آئی جی کو لکھا, وہ اپنے طور پہ ٹیک اپ کرتے کہ بھئی یہ کیا معاملات ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے. میٹنگز ہوئی, آپ کا اپنا آفیسر لکھ کے دے رہا ہے نا, پروونشل الیکشن کمیشن آپ کو خط لکھ رہا ہے, کاپی آپ کو مارک کر رہا ہے, تو اس کو آپ دیکھ لیتے. تو وہ سپریم کورٹ کا جو اوریجنل آرڈر ہے ہمارا جس کی کنٹمپٹ میں یہ آئے ہیں, اس میں یہی بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے ود امپیونٹی اٹھایا ہے اور فری تھا سر, کوئی کنٹرول نہیں تھا. کیا کہہ رہے ہیں جو آپ نے سر آرگومنٹس میں اس دن جو 23 کو جناب نے بھیجا تھا, واٹ اسسٹنس, کیا آپ کیا بولنا چاہتے ہیں جناب؟ سر ایسے ہے کہ پنجاب سے آئے ہیں, سر پنجاب سے آئے ہیں. نہیں اسپیشل سیکرٹری سر ہم نے یہ انشور کیا ہے اس دن جب یہ لاسٹ ڈیٹ تھی نامینیشن کی الیکشن کمیشن میں. میرا صرف اتنا سوال ہے کہ آپ کا اپنا صوبائی الیکشن کمیشن ایک خط آپ کو لکھ رہا ہے, کاپی آپ کو مارک کر رہا ہے, چیف سیکرٹری کو اس نے ایڈریس کیا ہے, آئی جی کو کیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے آپ. سر ہم نے انشور کیا ہے کہ تمام نامینیشن پیپر انشور کرنے کے علاوہ آپ نے کچھ یہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کا اسپیشل سیکرٹری ہے, تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کا اپنا آفس ہی انٹرنل آپ کی وہ ہے نا, وہ تو سر اس کے بعد اسکروٹنی ہوئی ہے, اس کے بعد نامینیشن پیپرز کی, وہاں پولیس ہی پولیس تھی سر. اس میں لکھیں learned counsel for the petitioner. نہیں یہ 47 تو ختم ہو گئی ہے. اچھا یہ ہے 47 نہیں ہے سر, یہ اوریجنل 40 ہے. یہ اس میں وی آر ہیئرنگ 40. اس میں لیکن کرمنل اوریجنل پٹیشن نمبر 40 اور 2023. Constitution petition number 47/2023 was disposed of by order dated, اس میں لکھ دیجیے learned counsel for the petitioner submits, was disposed of by order dated 22nd December 2023. And it is alleged
that the order has not been complied with. In this regard, reference is made to a letter dated 24 December 2023 of the Provincial Election Commissioner of Punjab, addressed to the Chief Secretary and Inspector General of Police, Punjab, Government of Punjab. Full stop. Chief Secretary Punjab. The Election Commission of Pakistan, the representative of the Election Commission of Pakistan. Next paragraph. The representative of the Election Commission of Pakistan state that they are doing everything to ensure free and fair elections in the country, and have submitted compliance report dated 26 December 2002 and have submitted a comprehensive compliance report, capital C, capital R, dated 26 December 2023 in this court, comprising of 161 pages, stating that requisite instructions have been issued. Full stop. We inquired from learned counsel as to state the precise allegations that the petitioner has, and were told, and learned counsel referred to the letter of the Provincial Election Commissioner of Punjab, and stated that the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, have disregarded the instructions of the disregarded the instructions directions of the Provincial Election Commissioner Punjab. So, under the circumstances, that notice be issued, that in the first instance notice be issued to the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, and Advocate General Punjab to submit concise statement, to submit reply, to submit report submit report with regard to whether the directions of the said directions have been complied with, and if not, why the same have not been complied with. ठीक है सर, एक और चीज अर्ज थी कि एमपीओ के इन्होंने कोई 550 के करीब एमपीओ के ऑर्डर्स इशू करके हमें वो डिटेंशंस भी इन्होंने की। एमपीओ का इससे क्या इंटेम की प्रोसीडिंग से क्या ताल्लुक है? Khosa साहब, and we have the benefit of senior counsel. ठीक है, now it doesn't look nice that we have to keep reminding you. अब आप ही लोग हम पे कल उंगलियां उठाएंगे कि जी 204 में आपने ये कैसे कर दिया, तो वो कैसे कर दिया। हमने इलेक्शन कमीशन को जहां तक हम दरखास्त दी है, 27 को दरखास्त दी। आपको कौन, हम आपको कह रहे हैं दे इनको, बाकी अदालतें भी खुली है। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये जो मैटर था ना, टेक्निकली स्पीकिंग ये मैटर था हाई कोर्ट ऑफ लाहौर का, मगर फिर भी हमने आपके लिए एक्स्ट्रा, वी आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो लेट्स नॉट जस्ट मेक जनरल एलिगेशन। जहां आपने कोई स्पेसिफिक बात की हम पूछते हैं। अब वो पंजाब, अब वो सिंध में गए और बलूचिस्तान में, आपका एलिगेशन पंजाब पे हमें समझ आई फाइनली कि भाई ये आपका मुख्तसर एलिगेशन है। तो जहां तक जेन्युइन बात है हम करेंगे, मगर एक ये ना कहेंगे दुनिया
दुनिया आपके खिलाफ हो गई है. Don't be have that frame of mind. Have a positive frame of mind. ये 1960 का MP हो जी. ये आप ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं ना कि आज तक पाकिस्तान आप लोग खत्म नहीं करते ना, जब आपकी गवर्नमेंट्स होती है आप खत्म नहीं करते हो, आप रिपीट कर दें उसको. Do you know under the conditions that the elections were fought when Ziaulak was there? You should know better. I know. You know. Yes. खत्म कर दिया करें अब जब भी. Do you know the elections when Mohammad Khan Junejo became Prime Minister? Do you remember those? वो तो. So they were क्या हुआ था बड़ी मुश्किल से भाई elections. तो don't just say that the worst election. लिस्ट बना के रखिए, जब गवर्नमेंट आए ना सारे ऐसे लॉस खत्म कर दीजिए. सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वरना तो वो शेरवानी सिलवाने चले गए थे. हाँ अच्छा. इस कोर्ट के इलेक्शंस करवाए. Anything else or you happy? अगर जब हम सवाल पूछे करें नाराज ना हुआ करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे. ब्रेक तो कल नहीं नेक्स्ट. इसके कब रखें? कल के लिए रख लें, परसों के लिए. वो रिपोर्ट कल हमारा वो लार्जर बेंच है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. मंडे को कर लेते हैं क्योंकि फ्राइडे को हमने वो गजाली साहब बेचारे पास्ड अवे, सो वी होल्डिंग अ फुल कोर्ट ऑन दैट. मंडे इज ऑलराइट बिकॉज उनको कल रखेंगे, वो टाइम ही ले लेंगे, फिर यही होगा. ठीक है, मंडे को कर दें. ठीक है सर. 8 जनवरी. ठीक है. आर यू अवेलेबल? I'll be available. ठीक है, 8 सही है. मैं आ जाऊंगा. कोई बात नहीं, सुबह देख लेंगे यार, 2 मिनट का काम है. चलो ठीक है. 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. अच्छा, हम अब कौन सा केस है अगला? बस खाली हुए बट्टू में. अच्छा, मिसिंग पर्सन का केस है. Let us refresh ourselves. 5 minutes. We'll come back in 5 minutes. ठीक है. किस उसमें आप है ना? और कौन? आपको तो हमने सुन लिया था ना. आपने अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस फरमाया था. अब आमना जंजुआ साहिबा हैं. ठीक है जी, मैंने कुछ पॉइंट्स जजमेंट से आपको रेफर कर दिए. सजेशंस जो आपने मांगी थी, मैं ऐसे फुल सब तक करूंगा. आप अटॉर्नी जनरल रेफर करें, आप सजेशंस दीजिए. जी ठीक है. जजमेंट्स क्या हमें इसमें क्या जजमेंट की जरूरत है? क्योंकि इस पे nomination papers before the returning officers, and or on the scrutiny day, the way they were roughed up and they were not allowed, the way the applications have been rejected. And where is the proof of any of this? I have given all that. Where is it? These are just words that you are uttering from the rostrum. Show us some proof. Yes, the CD is here, and CD is there. मैंने CM में जो 1 मूव की है, मैंने उसमें सारों के नाम दिए हैं जिनको ने रिजेक्ट किया, जो इन्होंने I don't know why we are doing this. Yes, why we are doing this? Can you please hear us and just hear the question and answer the question? Yes, sir. You have invoked the jurisdiction of this court under Article 204 of the Constitution, yes, which is contempt of an order of this court. Yes. So I don't want a yes from you, just hear us out. My learned brother has said that what order has the Election Commission of Pakistan violated? This court facilitated whatever you wanted, that you will go at 3 p.m. to the Election Commission and put all your grievances there. Now you are saying that the IG police and chief secretary have violated the order. They've got nothing to do with the election. If the order has been violated, it would be by the Election Commission of Pakistan. How does the IG of police and the chief secretary come into the picture? Either you file a different petition. This is a contempt matter. You obtain an order against ECP, you file contempt application against somebody who has got nothing to do with the election. If we issue them notice, they'll say we got nothing to do with the election. This is a matter of Election Commission of Pakistan. Why are you sending us notice? Can you please answer this legal question as opposed to referring to some CD or something like that? Answer the question. You want contempt action taken against individuals. Why? May I answer that? Ji, please do so.
My lord, your lordship's order was not just a ceremonial order to the Election Commission of Pakistan, reminding the Election Commission of its constitutional obligations and reminding how important a fair and free and a transparent election is, how the confidence of the people of Pakistan has to be conferred. It was not a mere ritual. Your lordship sent it to the Election Commission of Pakistan. It was meant to be enforced as such. And what was the enforcement? Which is provided under section 184, 185, 186, 187 of the Electoral Act of 2017. They have to ensure that Who is they? The Election Commission. Exactly, that's a very question. Election Commission. That's a very question I posed to you, which you have not answered. Please just wait. You are seeking a contempt action against the IGs of the provinces and the chief secretaries. यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे सुन लीजिएगा. आपको फिर मैं अपना अगर मफहूम न समझ. आगे इलेक्शन प्रोग्राम किस पेज पे आपने लगाया है वो दिखाएं. Without disturbing the timelines and election Constitution petition में लगाया है सर. वो तो अलग है ना, वो तो आपकी 47 के अंदर. 47 कितना है? भाई अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया उसकी अपील फाइल कर दें. सिंपल सी बात है. जी सर. अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है उसकी अपील फाइल कर दें. अब जरा ये भी सुन लीजिएगा. सैकड़ों पिटिशंस ऑल ओवर द कंट्री हुए, नकल भी नहीं दे रहे हैं. नकल के लिए सैकड़ों पिटिशंस. चीज की नकल नहीं दे रहे हैं. वो जो रिजेक्ट किए हैं नॉमिनेशन पेपर. आपके एक्सेप्ट कितने हुए हैं सर? एक्सेप्ट कितने हुए हैं? हाँ जी, एक्सेप्ट ये जो रिजेक्ट हुए हैं वो नहीं, रिजेक्ट नहीं, पहले एक्सेप्टेंस का बताइए ना. कितने पूरे पाकिस्तान में एनए और प्रोविंशियल मिला के? तो ये जो है वो एनए और पीएस जो टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया. 668 रिजेक्ट किए हैं और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए. फिगर्स ना आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट. ये मैंने जो CM1 of 2024 है और मैंने CD लगाई है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आप आपकी जो ये नहीं, पहले मैं ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आप बेशक आर्गुमेंट कीजिए. ये जो आपने लिस्ट भी लगाई है ना सर, ये है टोटल 668 फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हुए. जी रिजेक्ट. अब इसकी जो सोर्स आपके पास आप बता रहे हैं ना, वो सोर्स जो है लास्ट पेज पे लिखी हुई है. आपका पेज जो है 19 पेज 20 पे देखिए सर. द डेटा हैज बीन गैदर्ड थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. यस सर. ये भी कंफर्म नहीं है आपको कि 668 आपके पार्टी के लोग हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, और पार्टी को अगर ये नहीं पता है कि कितने रिजेक्शन है, और सारा जो डेटा गैदर हुआ है वो हुआ है थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ये आपको ये पता है कि 668 कंफर्म है आप? जी सर कंफर्म. तो ये अखबारों में भी आया है, मेरे पास भी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये होगा ना कि जो मीडिया पे आपने सुना है कि फलाना कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो आपने इसमें डाल दिया है. ऐसे सारे कंप्लेंट्स जो है पार्टी के नाम भी इसमें नहीं है. ये देखिए, ये एक जगह तो बड़ी अजीब बात लिखी हुई है इसके अंदर, पेज 9 ऑफ द लिस्ट के ऊपर उनके नाम नहीं है. और जिसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है सर, ये जरा बात तो सुन लीजिए ना. जिसका पेपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है वो अपील कर देगा, खत्म. अपील के लिए उसे नकल लेने के लिए रेटें करना पड़ रही हैं. सर ब्लॉक किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली. पेज 9. अब पेज 9 देखिए, पंजाब असेंबली है, ये आपकी CM1 के अंदर है. जी सर. अब ये हाल है कि पंजाब असेंबली के अंदर 273 पे बंदे का नाम नहीं है. मेजर फैमिली, मेजर फैमिली, मेजर फैमिली. अब ये कौन मेजर फैमिली है भाई? बंदे का नाम ही नहीं. से क्या मुराद है? मतलब मेजर साहब को इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेजर ताहिर सादिक ये बता रहे हैं. भाई तो नाम होना चाहिए ना. मेजर फैमिली आप क्या दिखा रहे हैं? मेजर है तो भाई ये ओमिशन है. आप ठीक है, नाम ओमिशन है, लेकिन मेजर सादिक ताहिर ये बता रहे हैं. So you are saying that we should do the job of the election commission? Yes, sir. We should, sir, please, let's please, this is a court of law. Take. I mean, if this is to, I don't know what, I don't understand. If someone's nomination paper has been rejected. En masse of one political party.
Shall we get the media to put mics here so you can address them? Can we conduct this as a court of law, please? I already listened. Can we conduct them as a court of law, please? I am before the court. No, let's then give us this much respect. If every second statement of yours will be a political statement, then fine. I'm asking a simple legal question. Let me complete the question so you can answer it nicely. There is an election program has been issued. Papers are rejected, papers are accepted. Someone is happy, someone is not happy. Each high court has nominated an election tribunal. You file a rejection thing there. Assume that what you are saying is correct. They're not giving you the order. You file a petition without the order. Say they have not given us the order. ये तो आप ऐसी don't be so helpless that they're not giving us order. There is nothing on record if you saying that we should allow all these appeals without hearing the other side who may have objected to. We don't know what the nature of the objection is. Someone can be a loan defaulter, someone can be maybe it was wrongly rejected. We don't know all these facts. We have to see every case individually. We cannot say, okay, do not reject the nomination papers of this political party and allow them of that political party. How can we do this? Either you go in contempt or you go, I don't know what sort of petition have you brought before us. It's a contempt matter, and rather than arraying the Election Commission of Pakistan, you've arrayed IG. Well, IG has got nothing to do with the election. It's the Election Commission of Pakistan. I don't think we need to teach that in the Supreme Court article. Where does this IG police feature in it? Where does the Chief Secretary feature in it? If you just want some newspaper headlines, fine, you'll get the newspaper headline, but please tell us the law. Does the election held, is it held by the Supreme Court of Pakistan? Is it held by the IG of police? Is it held by the chief secretaries of the provinces? There's a whole constitutional body set up which says the Election Commission of Pakistan. Now, yes, you may have a grievance against the Election Commission of Pakistan, and the law provides for remedies. And those remedies, if the papers have been rejected wrongly, please approach. It's not the Election Commission you'll be approaching the High Court, the Election Tribunal. My paper has been wrongly rejected. Okay, there's no order, right? You'll say they're not giving me the order. You think the Higher Court is so helpless, they cannot call for it. Why have you rejected their nomination paper? यहाँ करके ये CD हो गई और ये हो गया वगैरह हो गया. Let us get. We are trying to push through democracy, but every day we come across people not wanting to go into election. But you are standing behind every political party for election. We have repeatedly said so. And you are bringing here IG police को चले हम उसको नोटिस कर देते हैं. IG आज कर देंगे नोटिस, कंटेम्प्ट, उसके खिलाफ हम चार्ज फ्रेम करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. आप देख क्या करें? ऑर्डर हमें बता दें, ये ऑर्डर कर दें, आज हम कर देते हैं आपके लिए ऑर्डर. खुले हुए दरवाजे, अभी भी टाइम है. Why you wasting time? Go and file appeals against your rejection of nomination papers. Each case will be decided on its own merits. कोई अलाउ करेंगे, शायद कोई डिसमिस करें, I don't know. फिर आप शायद हमारे पास आ जाएं, फिर हम उसको देख लेंगे. राइट ऑफ हियरिंग दिए इनको, नहीं दिए इलेक्शन कमीशन ने. आप अगर सुनना पसंद करेंगे, मुझे 55 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए. अच्छा सर, ये बातें ना करें ना, तो मुझे जरा सुन लीजिएगा. अभी क्या कर रहे हैं हम? आपको आप हमारे सवाल के जवाब भी तो यही पूछ रहे हैं. आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. नहीं, एक मिनट. राइट ऑफ हियरिंग जो उस दिन 3 बजे था, वो आप बताए ना, इलेक्शन कमीशन वालों ने सुना है इनको. ECP को बुला लेना जरा, एक मिनट, पता तो चले ना कि जरा पेज 12 पर रुक जाइए सर. कंप्लायंस के तक ये आए थे 3 बजे आपके पास, पर हमने रिपोर्ट भी कंप्लायंस सबमिट की. नहीं आए थे, हियरिंग हुई थी. बिल्कुल सर, वी हैव सबमिटेड. आए थे, मीटिंग हुई, इंस्ट्रक्शंस हुई, डायरेक्शंस हुई टू ऑल द रिलेवेंट क्वार्टर्स, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड सर. इनके ये जो रिजेक्शन के अलावा इनके एक्सेप्टेंस का आपको पता है कितने हुए हैं? सर ये अभी डेटा है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का नहीं, टोटल का है सर. लेकिन ये अभी तो दैट विल बी डिसाइडेड बिकॉज द पार्टी पोजीशन विल बिकम क्लियर आफ्टर ऑन 13th of January when form 32 is drawn.
इन्होंने 13 जनवरी को क्या होगा? सैंपल अलॉटमेंट होगी तो इट विल ये रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स की अपील का तारीख कब तक है? आज आखिरी आज आखिरी 10 तारीख तक आज आखिरी है कि दायरगी की, और 10 तक फैसले करने हैं, 10 तक फैसले करने, आज आखिरी है दायरगी की। तो सुन तो लें जी, 3 तारीख today was the last date for filing nomination papers, appeals, and 10th of January is the last date for deciding the appeal. तो अभी वक्त है आज तो why you here in the Supreme Court? You should go and file appeals before the tribunals. कुछ अपीलें फाइल Why कर you दी हैं losing your right of appeal? रिजेक्शन ऑर्डर के लिए सारी रिटों हाई कोर्ट्स में जरा देख लीजिएगा कि फ्लड ऑफ रिट्स पिटीशन फाइल हुई। सर एक चीज मैं अर्ज करूं, जरा पेज 12 पढ़ लीजिएगा। आपका ऑर्डर था कि स्मूथ और फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंसी में हम क्या चाह रहे हैं? हम भी तो चाह रहे हैं ना यही हो। हम कब कह रहे हैं कि ना हो स्मूथ? जब आपको एक फोरम मौजूद है, व्हाई यू नॉट अवेलिंग ऑफ द फोरम? वो मैं करूंगा, वो तो मैं कर रहा हूं। जैसे आपने अभी फरमाया कि बगैर पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना। ये जरा पेज 12 पे पढ़िए जरा। मेरी ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह, ये इलेक्शन कमीशन का अपना एक डायरेक्शन है टू द आईजी एंड चीफ सेक्रेटरी, ये जरा पढ़ लें पेज 12 पर। और माय क्रिमिनल ओरिजिनल ये लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिख रहे हैं, ये जो है इलेक्शन कमीशन वाले। विद ग्रेट कंसर्न I have the honor to state, to bring into your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications almost from every district, as well as the media reports circulating that the candidates particularly belonging इस खत का इस केस से क्या ताल्लुक है? इसी से ताल्लुक है, इसी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इन्होंने जो बकौल इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं उसका ये असर हो रहा है। जरा सवाल तो खत्म होने देना। आपका हमने जो ऑर्डर पास किया 22 दिसंबर का ऑर्डर था, ठीक है? ये 22 दिसंबर का ऑर्डर था टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कोई खत आप पेश कर रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का खत जो 24 दिसंबर का खत है, तो यकीनन इस ऑर्डर से इसका ताल्लुक है ही नहीं। है, बिल्कुल है। इन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट पर इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को और डिफरेंट चीजों को आपकी कंप्लेंट किधर है इलेक्शन कमीशन के सामने? आपकी कंप्लेंट कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफिस में इधर दो कॉपी नहीं है हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट की। आपने कहाँ फाइल की है? चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी भेजा। ये किधर, ये आपकी कंप्लेंट किधर है टू ईसीपी? कंप्लायंस रिपोर्ट दिखाऊंगा। हमें हमारे पास नहीं आई है, अभी दे रहे हैं, देखते हैं क्या कंप्लायंस की ऑर्डर दी। वो मैंने जो है पेज जनाब को बताया था उस पर है, वही हमने भेजी थी। पेज 23 प्रेयर है और वो शुरू होती है मेन पिटिशन में। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 47 में ये शुरू होती है हमारी कंप्लेंट। पेज 13 से शुरू होती है, पेज 13 से लेके पेज 23 तक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन 47 में। और अब अगर इनके अपने चीफ इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी को। I'll ask the question again. You have sought contempt action pursuant to the order dated 22nd December 2023. In this order, in paragraph 4, it was stated the petitioner, or for that matter, any person representing any other political party in the electoral process may approach the ECP today at 3 p.m. for the redressal of their grievance relating to the election. Where is that application of yours to the ECP? ये उसकी पेज 13 से लेकर पेज 23 तक है in the CP Constitution Bill 47, 13 से 23. May I read the whole or may I read the last? I don't know which file number. Tell me the file number. This is Constitution Bill 47, 23. 13 से शुरू होती है तहरीक-ए-इंसाफ बनाम वर्सेस द फेडरेशन एंड देन द इलेक्शन कमीशन। जी ये पेज 13 पे। ये तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इसको आपके पास कॉपी मिली है? ये तो उन्होंने कंप्लायंस की है ना, ये जो ऑर्डर की जो कंप्लायंस है
یہ تو پہلے کی بات ہے نا, اس کے بعد کا آرڈر کے بتائیں بات. یہ آرڈر تو ان کے پاس ہوگا, آرڈر انہوں نے مجھے کوئی نہیں دیا الیکشن کمیشن نے. ہم تو تھک گئے سوال پوچھ کے, اب دوبارہ سن لیجئے سوال. اس آرڈر کے بعد آپ کی کمپلینٹ کہاں ہے؟ کمپلینٹ تو یہاں نہیں لگی ہوئی, میں نے نہیں لگائی, لیکن آرڈرز لگائے ہیں جو الیکشن کمیشن نے پیش. کمال ہے, اگر آپ جس آرڈر کی کمپلائنس الیکشن کمیشن نہیں کر رہا ہے وہ آپ نے کمپلینٹ ہی نہیں فائل کی. کمپلینٹ نہیں لگی ہوئی ہے, لیکن جو انسٹرکشن دی ہیں پیج 14 سے سی پی میں. I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. میں کرتا ہوں سر, ان کا جواب بھی مجھے الیکشن ختم ہو جائیں گے پھر آپ کا کمپلائنس رپورٹ میں کھوسا صاحب پیج یہ دسمبر 26 کا لیٹر ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا ہے, ان کو دکھائیں کھوسا صاحب کو. اس میں پیراگراف 4 کے اندر لکھا ہے that after the meeting the delegation of PTI the commission taking immediately notice has issued instructions. یہ موٹی والی کتاب میں پیج, اس کا پیج نہیں ہے, تیسرے نمبر پہ یہ پیج نمبر نہیں ڈالے. Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are annexed E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, اور پیج میں نے اگر یہ کہا ہے انہوں نے تو کنٹمپٹ بھی تو آپ نے انہی کے خلاف لگائی ہے, کہا انہوں نے, اور میں نے اپنی جو پٹیشن کرمنل اوریجنل لگائی ہے اس کے پیج 14 سے آنورڈز میں نے لگائی ہیں ان کی انسٹرکشن جو انہوں نے نیچے بھیجی پروونسز میں بھیجی. ٹھیک ہے سر. اب یہ پروونشل اسی لیے میں پیج 12 پہ پڑھ رہا تھا. یہ 132 سے شروع ہو رہا ہے اسی پیپر بک میں جو انہوں نے ابھی دی ہے نا کورٹ میں, اس میں سارے انسٹرکشنز ایشوڈ ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں یہی عرض کر رہا تھا اٹ واز ناٹ جسٹ مینٹ ٹو ایز اے ریچول کہ آپ بھیج دیں, اس پہ آپ نے قانون کے مطابق 184, 185, 186 اگر کوئی obstruct کرتا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس یا چیف سیکرٹری ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیتے ہیں, پولیس باہر کارڈن آف کر کے ریٹرننگ آفیسر کے آفیسر کو بلاک کر دیتی ہے, کینڈیڈیٹس کو اندر نہیں جایا جانا. اس کی شکایتیں تو چیف الیکشن کمیشن کو ہوگی نا. پڑھیں, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ پروونشل الیکشن کمشنر کیا لکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ فلڈ آف کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں, آپ اس کا کیا تدارک کریں. تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خاموش تماشائی کی طرح صرف اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے مبرہ ہو گیا کہ ایک لیٹر لکھ کر کہ جی اس طرح یہ کریں. اب یہ دیکھیں پیج 12 پہ ذرا کائنڈلی ریڈ, بے ود می, اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا, آپ کو پیٹرن پتا چل جائے گا پاکستان سارے میں کیا ہوا. ود گریٹ کنسرن, اب یہ لکھ رہا ہے پروونشل الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے, with great concern I have the honor to state to bring. I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, نہیں دیکھیے اس کو, یا مجھے کاپی نہیں ملی ہے, تو اب آپ دیکھیں نا, یہ تو کوئی اس کو کل رکھ لیں بشک. آپ پلیز مجھے نہیں ملی ہے یہ. آپ ذرا بات سمجھنے کی کوشش تو کریں نا. اب آپ کو مل گئی, اب آپ پڑھ لیجئے. اب یہ ہم روزانہ دیکھیے, روزانہ آپ کا ایک کیس تو نہیں ہم چلائیں گے کہ پورے سپریم کورٹ میں ہم پھر ایسا کریں کہ دس سپریم کورٹ شوڈ ڈو نو ادر ورک بٹ دس. یہ 200 صفحے میں یہاں کھڑا ہو کر تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. نہیں کریں ضائع, اب اتنا کیا اور کر لیں, کوئی فرق نہیں, ہم رات تک بیٹھ سکتے ہیں آپ کے لیے, مگر روزانہ نہیں بیٹھیں گے. آپ ایک یہ صفحہ تو پڑھ نہیں رہے ہیں, اب یہ تو ذرا پلیز پڑھ لیجیے گا. کون سا صفحہ بھائی, آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا. اب آپ
ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप देख, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है, इन्होंने क्या किया है। हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। ये अखाड़ा नहीं है क्या, किसकी आवाज भारी है। आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चलिए बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं, आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना हमें। सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिखे। अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है, ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा। आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज। With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी। 24 दिसंबर है। कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए। 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन। नहीं, आप पढ़िए ना प्लीज डेट। ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें। उसकी है 26 दिसंबर। तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना। उसके बाद की भी मैंने 26 के बाद की कोई बात बताएं। 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो बता दीजिए। मैं आपको CD भी चला के जरा देख लीजिएगा, और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ। चलिए अच्छा करते हैं आप, इट्स सिकनिंग अदरवाइज। लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था, वहाँ हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी। वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब PTI का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे। यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ। ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है। लिखी है, कहाँ लिखी है? ये जो मैंने CMA दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने। सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है। और क्या, किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ, ये जरा मुलायदा कीजिए मेरी ग्राउंड्स। उन्होंने यहीं से किया, ये देखिए। That despite ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे, पेज 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. तो अंग्रेजी है, ये उन्हें कंप्लायंस कर दी है, ये देखिए, ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है। आपकी जुरिस्डिक्शन, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को। आपने क्या किया जी? सर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं, इसे सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले, या इनकी ग्रीवेंस, देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड। वी हैव टेकन every steps to ensure that their nomination papers are accepted, and the RO has confirmed. The summary says so. खोल के देखिए क्या चीज है। ये समरी लगी है सर। नहीं तो आपको नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए? सर वो ये अभी once the RO finalizes these जो 22 पे हमने लगाई हुई है
हमने लेटर भेजा। ये पार्टी वाइज नहीं है सर, देयर इज अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है व्हेन देयर इज अ पार्टी टिकट एंड पार्टी सिंबल्स। सिर्फ यहाँ जमा करा के रिपोर्ट किया है। हम नहीं, इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप Compliance में सर अगर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों? सर वी डिड इंश्योर, ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें। कंप्लायंस वही है जो हमने लेटर लगाए हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं। नो सर, मैं आई रीड इट सर, ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके एनेक्स्चर्स हैं, इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in a 90 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary, ये समरी लगी और रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना, रिटर्निंग ऑफिसर से आप रिपोर्टें मांग रहे हैं। खड़ा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए उनको। क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन we did issue direction to each and every corner. आप IG को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस वो हाई हैंडेडनेस करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन के ताबे है इस वक्त सारी चीजें, मशीनरी जो है, they have to stand with you. They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section article 204 with regard to the Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is annulled. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this. ये बताएं ना, वो ये जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो कहाँ है? जी सर, वो तो 2011 में कमीशन बना था। ये इसके जजमेंट में बताइए। जी सर, इसमें सर जो है एक ही किताब ये पैराग्राफ में लौट, जो पैराग्राफ इसमें 3 है, यहाँ से शुरू है कि 3। जी सर, पेज 2020। किलिंग्स की बात है ज्यादा, मिसिंग पर्सन्स की बात कहाँ है? किलिंग्स, अबडक्शन फॉर रैंसम, सेक्टेरियन किलिंग्स, नहीं आप कह रहे हैं ना मिसिंग पर्सन्स की बात, वो कहाँ है इसमें? जी सर, वो सारी इसमें पूरी तफसील के साथ उन्होंने, ये तो ज्यादातर टारगेटेड किलिंग्स है ना जी, रैंसम, सेक्टेरियन किलिंग्स। जी, ये पैराग्राफ 5 सर अगर देखेंगे, IDPs, we direct the government, पैरा 5 से ऊपर 3 लाइनें, we direct the government of Balochistan to accelerate this process and at the same time पैराग्राफ कौन सा पेज बताइए? कौन सा है ये? 2005 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं, 2005 इसमें वो सब पैराग्राफ 5, द फेडरल गवर्नमेंट। जी जी, फेडरल गवर्नमेंट से ऊपर की 3 लाइन एंड देन फेडरल गवर्नमेंट पैरा 5 में भी, और फिर देन 6 भी। ये तो मर्डर्स एंड किलिंग्स हुई थी ना, सेक्टेरियन वायलेंस। जी, लेकिन मुझे लगा वो आदमी ये रेलेवेंट नहीं है। जी नेक्स्ट सर, जो एक्सक्लूसिवली मिसिंग पर्संस को जजमेंट है सर, दूसरी PLD 2014, ये सुओ मोटो एक्शन लिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 305। रेलिवेंट इसके पैरा है सर 16 और 17, पैराग्राफ 16 और 17 में लोग, पेज है 320। As the federal government through Prime Minister, Cabinet working through Chief Executive in terms of Article 90 is very much in the picture. It is their duty to ensure the protection of these persons and also to ensure that all those officers who are responsible for their removal and have failed to account for this so far should be dealt with in accordance with law. The Acting Defence Secretary through the law he apparently did his best, could not achieve the object for which... ये रेलेवेंट है जी मैडम, हाँ ठीक है, ये तो रेलेवेंट है जी मैडम। एनी अदर केस? जी सर, नेक्स्ट सर है इसका पैरा 16 भी एंड 17 भी सर। 17 जी, 17 में सर है और 18 में भी कुछ डायरेक्शन दी हैं। 17 पेज अगले पे है 321 पे, इट मे बी out of
context to note that in somewhat identical circumstances, the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated 1st so-and-so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006, despite the fact that the Nepal had not ratified the same. Correct. Aage? Yes, sir. یہ سر پھر اس کو 18 میں بھی تھوڑا سا اس حوالے سے ججمنٹ. جی سر دوسری ججمنٹ سر نیکسٹ ہے مائی لارڈ آتھر جج ہیں دھرنا کیس میں فیض آباد دھرنا کیس PLD 2019 سپریم کورٹ 318 اس کا ایجنسیز کے رول کے حوالے سے بھی 318 PLD 2019 سپریم کورٹ 318 اس میں ریلیونٹ پورشن کیا ہے؟ پیرا 43 میں لوگ پیرا 43 42 میں لوگ 42 سے پیج 348 The report submitted پیراگراف اس سے مسنگ پرسن کا کیا تعلق ہے؟ سر رول آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز کہ ان کا کتنا ہے کیا رول ہونا چاہیے کیا ان کا in accordance with constitution اپنے مینڈیٹ میں رہے اسپیسیفکلی کچھ ہے اسپیسیفکلی مسنگ پرسنس کا تو ایز سچ نہیں لیکن اسپیسیفکلی اگر اس میں ریلیونٹ ہے وہ جو ابھی لوگوں کو ہٹایا گیا ہے یہاں سے جو کر رہے تھے وہ پروٹیسٹ جی ان کو تو پروٹیکشن ملتی ہے کہ وہ پیراگراف پڑھیے نا آپ جی لافل اسمبلی وہ کر سکتے ہیں اس یہ دیکھیے پیراگراف 2 پڑھیے پیراگراف 53 کا جی سب 53 کا 2 پڑھیے جی Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law, imposing reasonable restrictions in the interest of public order. The right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. یہ تو ریلیونٹ ہوگا فار دی پیپل ہو آر پروٹیسٹنگ. مائی لارڈ پھر پیراگراف 3 بھی پڑھ لیں. جی سر protesters who obstruct people's rights to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. The Constitution earmarks the responsibilities of the Election Commission which is must I'm surprised you are citing this case. میں تو ہمیشہ سے اس کی میں نے کہا تھا جی سر ہم تو پہلے دن سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہر ادارہ اپنے ودن دی ڈومین آف کانسٹیٹیوشن کام کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جناب کے پاس آ رہے ہیں اور کورٹ ساتھ. اگلا بتائیے. اس میں جو میں صرف اس حد تک کرنا چاہ رہا تھا پیراگراف 2 میں the learned AGP tendered a document in a sealed envelope which spelled our eyes. وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کیس کے لیے. ٹھیک ہے سر میں آپ کو اس حوالے سے. اور سر اس میں ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں PLD 2022 سندھ 264 جی 264 سر PLD 2022 سندھ PLD 2022 سندھ 264 یہ بھی مسنگ پرسنز کے متعلق ہے سر. اس کا لاسٹ پیراگراف نہیں ایکچوئل کیا چیز پڑھے مجھے سے 266 پہ لاسٹ پیراگراف ہے. 266 لاسٹ پیراگراف The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. یہ تو جنرل باتیں ہیں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جی یہ 2 ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں سر وہ بھی میں ریفر کر دیتا ہوں. مسنگ پرسن پہ بتائیے. جی مسنگ پرسن یہ اسی حوالے سے جو ایک تو ہے سر PLD 2021 اسلام آباد پیج 1 جی ریلیونٹ پوائنٹ پیرا 3, 4 and 5. The incident
یہ وہ متی اللہ جان والا کیس ہے جو شاماد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. The incident took place The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Prima facie because ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کل تو آپ متی اللہ جان والا کیس نہیں بتا رہے تھے, آج آپ ججمنٹ سائٹ کر رہے ہیں. میں تو بتانا چاہ رہا تھا وہاں تک پہنچا نہیں تھا کہ حکومت میں کون تھا, پہنچا نہیں تھا وہاں تک. دوسری بات ہے کہ میں نے کہا یہ ذمہ داری پھر آپ حکومت جس کی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی, ان کی ذمہ داری ان کی شاید انٹروینشن سے ہی یہ جلدی باہر آئے ہوں, ورنہ تو دیکھیں نا سر باقی لوگ 4.5 مہینے بعد عمران ریاض باہر آیا. نہیں, آپ کا غلط فہمی ہے. آنریبل کورٹ کی بھی انٹروینشن تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نو, یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. خوش فہمی تو ہو سکتی ہے, غلط فہمی شاید نہیں. آپ سنیں گے تو بتا دیں گے آپ کو. آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں, ہم بہتر نہیں جانتے. یہ غلط فہمی یا خوش فہمی یا جو بھی بات ہے یہ ہو گئی تھی ریکارڈ, کیمرہ لگا ہوا تھا. کیمرہ لگا ہوا تھا جی, اس کا ریفرنس ہے جی. شاید کچھ اور نتیجہ نہ نکلتا. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں یو کاٹ وتھ یور ہینڈ ان دا کوکی جار, تو آپ وہ پھنس گئے تھے. سر عمران ریاض والے کیس میں بھی فوٹیج لگا ہوا تھا. پلیز ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ. It was egg on the face, and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in their abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 منٹ کا کیس یہ سالو ہوتا تھا 2 منٹ میں. نہیں, دیکھیے یا تو ڈر لگے یا حکومت چلا لیں یا پھر بس ایشو کر لیں. ہر چیزیں ہمارے پہ آپ ڈال دیتے ہیں کورٹوں پہ. یہ کیس 2 منٹ کا سالو کرنے کا کیس تھا. نو, ناٹ اے سنگل پرسن ریموو, ناٹ اے سنگل پرسن تھرون آؤٹ آف سروس. بس ٹھیک ہے, اچھا اوہ تم نے اٹھا لیا سب کے سامنے, دنیا نے دیکھ لیا, نہیں بندے کو چھوڑ دو. یہ وجہ تھی, آپ کا کوئی انٹروینشن نہیں تھا. She was a single order saying take action against this person. بعد میں بڑی بڑی لوگ آ کے تقریریں کر لیتے ہیں نا, جب جن کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت کر کے دکھائیں. اب جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں جا کے تقریر کرنا بیٹھ جاؤں کہ جی میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا. آپ کہیں کہ جی آج آپ نے کیا کیا, یہ بتائیے. سر میں ایک گزارش کر دوں, یہ آپ کا جو کیس ہے نا, دس از آئی تھنک دی اونلی ڈاکیومنٹڈ کیس. سر اس میں جو عمران ریاض والا کیس ہے اس میں سر جیل سے وہ رہا ہوتے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج کے سامنے گاڑیاں آتی ہیں, ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اس کا پورا ایویڈنس ہے. اور اچھا مجھے سر اس حوالے سے ایک عمران ریاض نے کل فون کیا, اس نے کہا جی آنریبل سپریم کورٹ مجھے اگر بلائے گی, سیکورٹی دے گی تو میں حاضر ہوں گا, میں سارے فیکٹس جناب کو پیش کروں گا. بہرحال میں نے ان کا پیغام صرف اس حد تک, اس کا خود فون آیا تھا, میں نے وہ جناب کو پہنچا دیا. اب سر میں ایک گزارش کروں اس حوالے سے. رک جائیے سر, اب آپ یہاں رک جائیے سر. یا آپ نے یہ پلیٹ فارم آپ پھر پولیٹیکلی استعمال کرنا شروع, یہ سن لیجئے. اس کیس سے پہلے ایک اور کیس تھا جو کہ ابصار عالم صاحب تھے, وہ میڈیا پہ بات کر رہے تھے. ہم نے کہا ہمارے سامنے آ کے بات کریں. کیوں؟ ٹھیک ہے, وہ آئے سامنے بات کی. بالکل کیوں, وہ کوئی اثر رسوخ والے شخص میرے خیال میں نہیں ہے. نہیں سر ہیں, بالکل نہیں میرے خیال میں نہیں ہے. وہ آئے, انہوں نے ہمت پکڑی اور سامنے بات کی. یہ بات آپ کے ذریعے کہہ رہے ہیں اگر مجھے بلائے گا ہم کیا ریڈ کارپٹ پہ چھائیں گے کسی کے لیے؟
ایسے نہیں ہوگا نا. ہمارا کام ذرا سا دیکھیں آپ, یو آر آفیسر آف دا کورٹ بفور اینی تھنگ ایلس. تو ہم زیادہ سے زیادہ ہیبس کارپس میں پروڈیوس دا باڈی پیش کر سکتے ہیں نا, یہی ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی ایلیگیشن اگینسٹ سم ون, جائے فائر کاٹیں, جائے سوٹ فار ڈیمیجز فائل کریں. اگر مجھے عدالت بلائے گی, کمال ہے, آپ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں, ہم تو ان کو نہ بلانا چاہتے ہیں نہ ان کا نام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ برائے کرم جو کل کر رہے تھے, ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی مت کریں, اور وہ نہیں کر رہے. یہ آپ نے نہیں, یہ پروٹیکشن کے لیے انہوں نے چونکہ کہا ہے سر. پروٹیکشن تو ہمارے پاس کیا کوئی فوج کھڑی ہے جو ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے؟ آرڈر تو فرما سکتے ہیں نا سر. آپ کا آرڈر از دی فائنل اتھارٹی. جو وائلیٹ کرے گا he will suffer, he will face the consequences. ایسے کیسے باہر جاتے ہیں وہ؟ ان کو ابھی بھی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کیا؟ جو اس کا ظاہر ہے اتنی پروٹیکشن نہیں ہوگی. وہ یہاں کے سچ بولے گا, فیکٹس بتائے گا. 4.5 مہینے جس حالت میں رہا, he was not able to speak even for few months. پھر باہر جائے گا, یہاں تو آ کے اسٹیٹمنٹ دے دے گا. شاید وہ, بہرحال میں اس پہ مزید کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. میں اس پہ آگے چلتا ہوں. شاہین صاحب, you are up now. I will use another word. Can you plead a case of a person not before us? اگر بندہ اس قابل نہیں ہے, who are you to plead his case? اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے, جو قابل ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کے بارے میں تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. میں نے تو جناب کو ججمنٹ لکھائی ہے, خود عرض کی ہے نا, مگر آپ ذمہ داری بھی کھڑی کریں نا. پھر ذمہ داری تو جناب نے تعین فرمانا ہے. نہیں, ہمارا دیکھیں اب آپ پھر اس کو وہی بنا رہے ہیں سیاسی اکھاڑا. ہم یہ کہتے ہیں مائی لارڈ, کمیشن جب بنے گا. حد تک کی جو پٹیشن تھی نا جو آپ نے فائل کی, اس میں آفس آبجیکشن کے لیے وہ لگی تھی, وہ دیٹ ہیز بین ریمووڈ. جی وہ تو فردر جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ ہوں گے. ویٹ فار سم ٹائم. اگر آپ یہ انڈیویجول کیسز کریں گے تو پھر ہم آفس آبجیکشن سسٹین کرنا پڑیں گے. ہم آپ کی پٹیشن انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ کا جینوئن کنسرن ہے مسنگ پرسن کی, پبلک امپورٹنس اور پبلک ایٹ لارج. اگر آپ کے ذہن میں 2-4 ہی لوگ نہیں سر, ٹھیک ہے, نہیں 2-4 نہیں, سبھی جو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا مسنگ میں ہیں یا جن کے ساتھ کوئی مسنگ میں رہے ہیں, تو جناب کا اونلی ان ریلیشن ٹو دی سی ایم اے وہ آپ کی آفس آف. دیکھیں پھر اب آپ تشریف رکھیں, ہم دوسروں کو سن لیتے ہیں. نہیں سر, میں تو اپنی بات بس فردر ایکشن از ٹو بی ٹیکن. دیکھیے نا ابھی ایک کنسولیڈیٹڈ آرڈر ہوگا نا ابھی جب. سر میں تو جناب کے سامنے عرض کروں گا, جناب نے فیصلہ فرمانا ہے نا کہ میرا کون سا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب اس کو نہیں اس قابل سمجھتے کہ اس کو پارٹ آف مائی پریئر یا ریکویسٹ ایکسیپٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. دیٹ یور لارڈشپ ہیز ٹو ڈیسائڈ. لیکن میرے جو سبمیشن ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لا سائٹ کرنا ہے. جی کیس لا, ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا, وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ. ان کو آنے دیں, ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گیا نا. جی ہو گیا, آبجیکشن ریموو ہو گیا, لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں, وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں, اور پوری بات کر لیں نا. جی تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی, میں جناب کو انفارم کر دیا, کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے, آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے, اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے, لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ وہ بات نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ جب الیکشن ہوا تھا, جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ, جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آ گئے. اب آپ ان کے اسپوکسمین کدھر سے بن گئے ہیں؟ یا تو سوری ٹو سے نا, پلیز بیکم اے پروفیشنل, obtain a وکالت نامہ and file a وکالت نامہ. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court. And then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا, مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا, تو ہم جناب کے سامنے ایک ارزداشت تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا, آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا, وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا, اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی, ان کو بلایا جائے گا, وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. کے لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا, تاکہ اس کو سنا جائے whether this is maintainable or not, or whether the commission is to be made or the earlier commission is totally ineffective.
یہی میری سبمیشن ہے آپ کے سامنے. پھر آپ تشریف رکھیں, ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بس صرف ایک ججمنٹ سے میں ریفر کرتا بنانا چاہ رہے ہیں, پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر, نہیں میں نہیں بنانا چاہتا. میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی, please don't do this. سر جناب نے, میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر دیکھ لیں سر. 2018 CLC 1858 ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر. 1858 جی سر, 1858 پیرا 17 ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر. اسے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں. Now can we go to the next case? تھینک یو. کتابیں اٹھاؤ. یہ امینہ مسعود صاحبہ جی, آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. تھینک یو مائی لارڈ. ایک سیکنڈ, آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. جی یہ CP 50 ہے ان کی. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ, ہماری میرے شوہر جبری گم شدہ ہوئے تھے 2005 میں. تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا, افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا, اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گم شدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے. 2005 میں کس کی حکومت تھی؟ 2005 میں پرویز مشرف کی دور میں ہوا تھا یہ. اس کے بعد پھر سو موٹو کے تحت ہی تقریباً آل پاکستان سے 41 پٹیشن. آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر جی بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کے کالجز ہیں اسلام آباد میں. ریکور ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جی ریکور ہوئے ابھی نہیں؟ نہیں ابھی تک نہیں ہوئے. نہیں تو آپ کے پاس بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ کو انٹرسٹ کیا ہوگا اسٹیٹ کا ان کو اٹھانے میں؟ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ہمارا تو یہی ایلیگیشن ہے کہ جو لیٹر آن جو لوگ ریلیز ہو کر آئے انہوں نے ایویڈنس دی کہ میرے ہسبینڈ کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن نہیں. ریزن کیا تھا؟ کوئی ریزن نہیں ہے. nobody told me ever کہ کوئی ریزن ہے. دیکھیں اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں نا جی کہ یہ زیادہ بولتا ہے حکومت کے خلاف, اس کو اٹھا لیا, مطلب یا یہ پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی تھی, اس کو اٹھا لیا. کوئی ریزن آپ کے ذہن میں ہے؟ لارڈ میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا, کیونکہ مائی فادر ان لا از آلسو ملٹری پرسن, از اے کرنل ریٹائرڈ, اور وہ اس وقت مشرف کے سینئر بھی تھے. مطلب I'm just saying that why you think the state was involved or you're not alleging it's a state? I think it's state because جو بھی later on 2007 میں 2006 میں 11 میں 8 میں جو لوگ رہا ہو کر آئے انہوں نے اس کی ایویڈنس دی. the star witness was عمران منیر. دیکھیں دو تین وجہ ہو سکتی نا. ایک تو مسٹیکن آئیڈینٹی, وہ غلط فہمی میں کسی کو اٹھا لیا, ایک ہی ہو سکتا ہے پاسبلٹی, ٹھیک ہے. تو پھر the minute they realize یعنی یہ تو غلط اٹھا لیا, اس کو چھوڑ دو. یا کوئی مے بی ٹرمپڈ اپ چارج یا جو بھی ان کے ذہن میں ہو, جس نے بھی یہ کام کیا کہ جی یہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس کو اٹھانا ہے اس وجہ سے, یہ زیادہ
ایکٹیوسٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو آپ جو بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بزنس مین تھے, تو میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. 2001 سے لے کے یہاں پہ ایک وار اینڈ ٹیرر, یا تو آپ کہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے کسی کو, مجاہدین کو, یا کیا, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا. وہ تو ایک سوشل ورکر بھی تھے, ان کا ایک ہاسپٹل بھی تھا, وہ آج بھی چل رہا ہے. جو اپنے I'm just trying to understand. I'm not saying کہ نہیں اٹھایا ہے, مگر میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں, جب تک انسان کو وجہ نہ پتا چلے تو پھر کلپریٹ جو کرمنل کیسز میں ایسی ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اس طرف جاتی ہے کرمنل پروسیکیوشن. ٹھیک ہے کہ یہ اس کا کوئی ذاتیات کا جھگڑا تھا, یا کوئی زمین کا تنازع تھا, یا وہ اس کے خلاف بات کرتا تھا, تو اس سے کڑیاں جڑتی ہیں, ہاں یہ پاسبل پرپیٹریٹرز ہو سکتے ہیں. تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وائی was he member of some organization which the government did not like, or any case like that? No sir, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. میرے فادر ان لا نے جو, کیا عمر تھی جب وہ, he was 41. آپ کا یہ کیس کمیشن میں چل رہا ہے, یہ ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے, آپ نے کوئی کمیشن نے 2013 میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا. کیا اس کا کیا آرڈر کیا کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو obviously کیونکہ ہے آرڈر آپ نے لگایا اس میں؟ نو سر, اس لیے نہیں لگایا کیونکہ آرڈر تھا, بیکاز آپ نے لکھا ہے کہ ارلیئر جو ہے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے ہیں, 600 پروڈکشن آرڈر کمیشن نے ایشو کیے تھے. بالکل, that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005. راولپنڈی گھر سے نکلے ہیں, اور ان کے دوست بس اسٹاپ پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے. دونوں نے ڈیگو بس لی ہے ٹو میٹ. پشاور جا رہے تھے دونوں. اچھا, کیوں؟ ان کے ایک دوست ہیں عبد الغنی, ان کے ساتھ ملنے کے لیے. تو جب ان سے بھی رابطہ کیا گیا, عبد الغنی بھائی سے بھی, تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے. آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہیں, کچھ ہماری ایجنسیز بھی ہیں, تو آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ مطلب لاسٹ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ جو ایویڈنسز ہمیں ملے تھے جو کہ ریلیز پرسنز کی طرف سے تھے, تو انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ISI کی کسٹڈی میں تھے. انہوں نے دیکھا تھا جی, اور وہ عید کے دن سے ان کو جانتے تھے, جانتے نہیں تھے, مگر انہوں نے پھر بھی ان کا نام پوچھا, تھوڑی بہت بات چیت ہوئی, اور باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں کہ ان کے لائر نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے عمران منیر نے مسعود جنجوا کو دیکھا ہے, اور انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اس بات کو کتنا عرصہ گزرے؟ اس کو 2007 میں یہ ہوا تھا, اور اس وقت 2005 سے لے کے 2018 تک تقریباً میں نے 749 CMs ڈالی ہیں HRC 965 میں, اور جو کہ صرف میرے ہسبینڈ سے پرٹیننگ نہیں تھی. جب GIT بناتے ہیں نا, تو GIT میں آپ نے کبھی اپیئر ہوئی ہیں, پارٹیسپیٹ کیا GIT میں؟ سر سب کچھ ہوا تھا, مگر GIT میں ISI کے اور IB کے سارے ممبران ہوتے ہیں نا, پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں, SSP لیول پہ یا DIG لیول پہ, تو 8-10 لوگوں کی جو GIT بنتی ہے, کبھی آپ پیش ہوئی ہیں GIT میں؟ بے شمار دفعہ پیش ہوئی ہوں, راولپنڈی میں, CPO کے آفس میں, کمیشن کے اندر, اور ہر چیز. سر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ تمام کیسز جو کمیشن میں چل رہے تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہے تھے, تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہاں سے ڈسپوز ہوا تو یہاں سے آپ نے ابھی کہا کہ خدا نخواستہ وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں, تو وہ کیا ریزنز تھیں اس کی؟ ان کا تو یہی کہا ہے کہ وہ وزیرستان میں ان کو جو ہے طالبان نے اور اس طرح اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس نے مار دیا. بٹ یہ کہ اس وقت کے جو ججز تھے, جس طرح جواد خواجہ صاحب گئے تھے بلوچستان؟ نہیں, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ اس کے اوپر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دے پائے تھے, نہ وہ یہ کہہ پائے تھے کہ کہاں پر ان کی قبر ہے. What do you want us to do? My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faez. کریں کیا بتائیں نا, جو ان کی جو, کیونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی جو کمیشن میں, تو وہ سارے کیس ڈسپوز آف ہو گئے تھے 2018 میں. بتائیں نا, کمیشن کو چھوڑ دیجئے نا, اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیے ایک 2-3 باتیں نا,
ایک تو یہ آپ نے اس موجودہ حکومت یا اس موجودہ حکومت کے جتنے بھی اہم اہلکار ہیں ان کے خلاف تو ایلیگیشن ہے نہیں. اب آپ کا ایلیگیشن ہے کہ 2005 میں ان کو غائب ہوئے وہ 30 جولائی 2005. 30 جولائی 2005. تو اس بات کو کتنے سال ہو گئے؟ 15 25 تو کتنے سال ہوئے؟ 18 سال. جی سر. ہاں 18 ایئرس. 18 سال. اس وقت 40 ایئرز اب 18 ایئرز ہم کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ کچھ ہم مدد آپ کی کر سکیں، مگر کوئی کیا ہم کیسے کر سکیں؟ کوئی یا تو دیکھیں آپ کبھی ہوتا ہے نا کہ جی کوئی تنظیم سے وابستگی تھی، یہ کوئی غلط بات تو نہیں، تنظیم انسان جوائن کر سکتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ انلیس اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. یا پھر کوئی اور بنا پہ جی ہوا ہو تو کئی شک جاتا ہے نا اس طرف یا اس طرف، یا پھر وہ غلط فہمی میں اٹھا لیا ہو یا پھر چھوڑ جاتے ہیں عام طور پہ لوگ. ہو سکتی ہے کیونکہ جب میرے فادر ان لا ٹاپ آفیشل سے ملتے تھے، مائی فادر ان لا، آپ نے کہا آپ کا تو کنیکشن بھی ہے آرمی سے. جی فادر ان لا آپ کا کیا کنیکشن ہے آرمی سے؟ مائی فادر ان لا از اے کرنل ریٹائرڈ. Actually he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter he met the President پرویز مشرف سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے ISI کے جو DGs تھے ان سے ملاقات کی. ان کو بلا بتایا کیا تو انہوں نے ان کو یہی آدمی ہے، ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یا نہیں. ہمارے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ان کو ملی کہ ہم ابھی ہیو نو انٹرسٹ ان یور سن، وی ہیو نو انٹرسٹ، ہمیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم آپ کے بیٹے کو کیوں پک کریں گے. پھر جی تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ آپ بتائیے نا کہ جب وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کیسز اٹھائے بیکاز اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن ٹو اس. ٹھیک ہے، بٹ اینڈ دس مسٹ اسٹاپ. Exactly. And there used to be much more missing persons and I think اب شاید نہیں ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا. I don't know, I may be wrong. مگر I've been Chief Justice Bulustan as well. So بٹ تو اگر کوئی اسپیسیفک چیز ہے تو ہم کر سکتے ہیں. آپ کہیں ہم حکومت سے پوچھ سکتے ہیں مگر پرابلی کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا ادھر سے. بالکل میں یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ وہی والی جو جس طرح سے آپ بتائیں نا کیا چاہتی ہیں وہی ہم کریں گے. quite a lot of torture over these years. You have a lot of experience. You know. You have more experience than us. Exactly. تو اب آپ بتائیں what shall we do for you? My lord, for my case, for my husband's case, if you can, اب کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پراپر گورنمنٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے کوئی اس طرح کی بات کر سکے. وہ آپ ہم پہ چھوڑ دیجئے نا، آپ ہمیں صرف بتائیں، باقی ہم کام کر لیں گے. دوبارہ بھی GIT کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself کہ کیا ہوا، کہاں چلے گئے. اگر وہ دانا واسطہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آف کورس میرے خیال میں ملٹری سے ہی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ملٹری سے آف کورس ملٹری سے جنرل عاصم منیر سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے میرے ہسبینڈ کو، کہاں چلے گئے. آپ نے نام لیا تو زمانے میں تو شاید وہ میجر یا بھی نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، کیپٹن ہوں گے. So he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about ان پہ بھی آتے ہیں نا، پہلے آپ کا پرسنل کنسرن تو ہو جائے نا، وہ تو پھر بات کی بات ہے. Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information they will tell you. So can you sort of, we'll pass a order, but unless you want to add something. My lord, یہ بھی دیکھ لیجیے گا AG صاحب، اگر there is an opportunity or option of constituting second GIT، اگر GIT میں ہوگا تو اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں. GIT میں کیا ہے وہ دیکھیں، وہ GIT دیکھ کے ان کو کم سے کم جواب دے دیں گے، وہ ایک خانہ پوری ہو جائے گی، کچھ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. اس میں my lord کچھ بھی نہیں ہوگا. Because she's gone through the process. Now if it can be once again
done with fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. My lord, so ये जरा आप देखें that she has been in the forefront not only for her own husband but for others also. ठीक है. So the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. These are or any other? It's Ministry of Interior essentially. And Ministry of Defence. Because she says she's alleging it against Faez Mussarat. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." तो वो कम से कम तसल्ली तो हो जाती है ना लोगों को कि पता तो हमें चल गया. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Musharraf at that time. Yes. And then he said that we have no interest in him. Said, so she said so. You've heard it correctly. So still, a person may still not tell the truth. So I will furnish a report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ठीक है? My lord, I am noted. अच्छा, अब बाकियों का केस बताइए आप. My lord, ये जो first तो यही है कि ये बताइए कि मिसिंग पर्सन्स के जो आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं. जी जी. ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई बल्कि चलती रही. सिमिलरली इन PMLN, BTI एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयर टेकर. तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है. आजकल भी ये बात हो रही है? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है. आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने में. जी बताइए. जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो रही है. नहीं, जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं. हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं. जी जी. ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए. हाँ जी. खुद आ गए, दस्तयाब हो गए. जो बात है वो एक अलग इशू है. हमारा जो jurisdiction है वो habeas corpus की jurisdiction है. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है? Habeas corpus की jurisdiction limited होती है. Produce the person. ठीक है? That is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से. नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली पूछेंगे जवाब देंगे ना. अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं, और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ. इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीज़ें दौर बदलते जाते हैं ना. कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में. ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना. तो फिर भी अगर
آج یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک سکتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. دیکھیں اس کو ذرا سا کلیریفائی کر لیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں ٹائم نام دے دیں اور پیریڈز دے دیں نا تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہو گئے پرانے مسنگ پرسنس, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں جی. ایک دوسرا ہے کہ یہ چیز کو روکا جائے, ختم. بالکل بالکل. ایک ہے ان کو دستیاب کروایا جائے, وہ الگ ہم ذرا اس کو کرنا چاہتے ہیں, لاجکلی چلنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کم از کم پرانا تو نہیں مسئلہ حل کر سکیں شاید, اگر آج والا تو ہم کر سکتے ہیں نا, رکوا تو دیں نا ساری باتوں کو, مسنگ پرسن کو رکوا دیں. بالکل سر, میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کی کاگنیزنس لیں گے تو اس کی پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ کیا یہ اسٹیٹ کی پالیسی آج ہی ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ پالیسی روک دی جائے, کہ لوگوں کو اٹھانا کم از کم لسٹ سٹاپ ہو جائے, تو پھر ہمارے پاس صرف پچھلے ہی رہ جائیں گے جن کو ریکور کرنا ہوگا. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with if you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. This is a statement of law, and but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow or transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کا اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. دیکھیے یہ ذہنیت, جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہوں because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. I think
The state some needs to be definite inclusive. statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنز کا یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر، ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice Retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. So he should be now, what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے کمیشن سے آئے ہیں؟ رجسٹرار ہیں آپ کمیشن؟ آپ سامنے آئیے. یہ کتنے لوگ ہیں اس کمیشن کے ممبران؟ سر یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں اور صاحب شریف ورک صاحب ریٹائرڈ. شریف ورک صاحب، محمد شریف ورک. محمد شریف ورک یہ کون ہے؟ یہ ریٹائرڈ آئی جی ہے جی. اور کوئٹہ میں ہے ہمارے جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. جی یہ والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر ہاں تنخواہ ملتی ہے سر، تنخواہ ملتی ہے سر. سیکریٹریٹ ہے پورا. کتنا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ سر میں اندازہ نہیں ہوتا، بتاؤ سیکٹری کو مجھے پتہ نہیں. میرا خیال 4-5 کروڑ کا ہوگا. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ رجسٹرار ہوں سر میں کمیشن کا. نہیں تو یہ بس یہ سر تنخواہیں لینے کے لیے کمیشن ہے یا کوئی اور کام نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کام کرتا ہے سر کمیشن ہمارا. بتائیں نا. کراچی میں ہمارے جسٹس آپ کی اینول رپورٹ آپ جاری کرتے ہیں، منتھلی کرتے ہیں، کوارٹرلی کرتے ہیں، منتھلی بھی کرتے ہیں. کتنی ریکوری کرائی ہے آپ نے آج ہماری تک؟ تو بڑی ماشاءاللہ اچھی. تو ہم نے بلوچستان میں ریکور کی وہ بھی آپ اپنے پاس ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا ہے. پھر نہیں کتنی ریکوری منتھلی کیا ہے ریشو آپ کا ریکوری کا میں ابھی آپ پرسنس کا؟ یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ جناب کو دیتا ہوں. لیٹسٹ نہیں ویسے ہی بتا دیجیے نا، مہینے میں کتنے ریکور کرا، کتنی دفعہ میٹنگ اسمبلی بتاتا ہوں. نہیں بات سنیں، آپ کی میٹنگ مہینے میں کتنی دفعہ ڈیلی ہوتی ہے سر. کیا ڈیلی ہوتی ہے؟ ڈیلی ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے ہیں متاثرین کے گھر والے، آئی بی سارے سب ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. تو پھر ریکوری کتنی ہوتی ہے مہینے میں، کیا ایوریج ہے؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں سر. اس مہینے میں ہمارے 46 جو ہے نا یہ ڈسپوز آف ہوئے، یہ ریکور ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اور 46 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ریکور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انگریزی کے دو مختلف لفظ ہیں سر. کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ سر ٹریسڈ کہہ لیں. ٹریسڈ آپ کی رپورٹ کدھر ہے؟ یہ ہے نا یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، دکھائیے کیا چیز ہے. 91 دیکھ لیں وہ سارا اس میں دیا ہوا جو ان کے مطابق دیکھتے ہیں نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کسی کا نام بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ لکھا ہے آپ آج کتنے مسنگ پرسنز ہیں آپ کے ریکارڈ میں؟ یہ لکھی ہوئی فگر ٹاپ پہ نا، بتا دیجئے نا. یہ جو ٹرم آپ استعمال کر رہے ہیں کیسز ڈسپوزڈ آف اپ ٹو دسمبر 2022 7001، ڈسپوز آف سے کیا مراد ہے بھائی؟ یا ریکور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ مختلف آپ کے پاس کیٹیگری ہونی چاہیے نا. دیکھیں جب ریکور ہوتے ہیں بہت سے وہ ریکور ہوتے ہیں جن پہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں فلانے کیس میں کسٹڈی میں. اصل میں سر یہ 4 یہ اس کا مطلب یہ ہے. اب آج کل مسنگ پرسن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ تو ہمیں نہیں پتا، ہمارے پاس جو کیس آتا ہے اس کا پتا ہوتا ہے ہمیں. آپ سے یہی تو پوچھ رہے ہیں، آپ کے پاس آج کل کیسز آ رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں سر. آپ کا سیکریٹریٹ کہاں ہے؟ سر یہ G91 میں سر. G91 یہ کیا گھر ہے؟ نہیں سر یہ سول ڈیفینس بلڈنگ ہے سر. اچھا اس کے اندر ہے. نہیں تو آپ کے پاس فار انسٹنس دسمبر 2023 میں کتنی کیسز آئے ہیں فریش؟ سر یہ بتانے لگا 46 کیس آئے ہیں سر فریش. جی فریش. اچھا ان کا کیا بنا؟ سر یہ پروسیس شروع کر دیے نا اس کا ہمارا. اس میں پہلے ہم JIT بنواتے ہیں، اس کے بعد JIT کیا چیز ہے؟ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. کیا چیز ہے بتائیں، کون ہوتا ہے اس کا ممبر؟ اس میں SSP انویسٹیگیشن ہوتے ہیں اور ساتھ میں ریپ ہوتے ہیں IB کے، ISI کے، MI کے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے. اس کے 5-6 لوگ. یہ آپ بتائیں، یہ مس جنجو آپ گئی اس کمیشن کے سامنے؟ یس مائی لارڈ، جب یہ بنا تھا 2011 آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہیں؟ مطمئن نہیں ہیں ہم لوگ. ہم لوگ سے مراد ہم اور تمام جو وکٹمز ہیں جو وہاں پہ پیش ہوتے ہیں. آپ بھی کیس میں ہیں، اس میں آپ کے ساتھ انعام صاحب جو کھڑے
آپ بھی اس کیس میں ہیں؟ I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. یہ آپ مطمئن ہیں اس کمیشن سے؟ Not at all, sir. Not at all. کوئی مطمئن نہیں ہے سر. Dispose of کی ہیں. Honorable نے بڑا. ایک سیکنڈ لمبی بات نہیں کریں, آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ Dispose of جو ہے اس میں آپ صرف ہاں یا نہ بتا دیں. Not satisfied, sir. ایک سیکنڈ اعتزاز صاحب, آپ مطمئن ہیں اس کمیشن سے؟ بس صرف پوچھ رہے مطمئن ہے یا نہیں مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن ہے یا نہیں مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن, بس اوکے. یہ یہاں جو آج جو کیسز ہیں کوئی مطمئن ہے کمیشن سے یا نہیں ہے؟ نہیں, کوئی مطمئن نہیں. اچھا, یہ 2023 تک آپ نے 10,088 کیس لکھے ہیں, یہ کب سے شروع ہوئے ہیں 10,088؟ یہ ٹوٹل ہو گئے جو ہمارے پاس. میرا سوال سنیں, 2011 سے سر. آپ کے پاس مائی لارڈ جو پوچھ رہے ہیں نا, آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہونے چاہیے. دیکھیے ایک نمبر سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے, ہمیں نام سے ہے. ٹھیک ہے, فلاں شخص مسنگ ہوا اس تاریخ کو, آپ کے پاس رپورٹ آئی اس تاریخ کو. ٹھیک ہے, وہ اس وقت کا زمانہ مطلب ایئر ہمیں پتہ چلے گا نا, تو رسپانسبلٹی پھر ادھر جاتی ہے. تو ایسا ڈیٹا آپ کے پاس ہے؟ جی ہے, بلکہ ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا سارا. سنیں نا, آپ نے یہ کاسمیٹک ویلیو ایسی رپورٹ بنی ہوئی ہے, آپ نے لکھ دیا ہے ٹوٹل نمبر آف کیسز اپ ٹو دسمبر 2023 10,088. یہ 10,000 کب سے شروع ہوئے ہیں یہ کیسز؟ یہ اب ان کے ہسبینڈ تو پہلے میں عرض کرتا ہوں, یہ پہلے ہی کمیشن ایک بنایا تھا سپریم کورٹ. آپ کو ایئرلی بنانی چاہیے نا, جو پچھلا ڈسپوز ہو گیا, بیک لاگ پورا لے کے چل رہا ہے. آپ یہی نہیں پتا 10,000 کیس کب سے پینڈنگ ہے آپ کے پاس؟ سر پینڈنگ وہ لکھے ہوئے نیچے, جو پینڈنگ اس وقت ہیں وہ بھی نیچے لکھے ہوئے. یہ 3 لوگوں کا کمیشن ہے, محمد شریف ورک, امان اللہ یاسین زئی صاحب اور جاوید اقبال صاحب, اور جسٹس ضیاء پرویز صاحب کراچی میں ہے. اور کون؟ جسٹس ضیاء پرویز صاحب کراچی میں ہے. اور ڈیلی اسمبل ہوتے ہیں, کیسے آتے ہیں کراچی سے؟ نہیں, وہ کراچی میں کرتے ہیں, اس ان کا کیسز وہاں کرتے ہیں, الگ الگ کرتا ہے, الگ الگ. بلوچستان کے جو ہے وہ کوئٹہ میں ہوتے ہیں. اور ریکارڈ رکھتے ہیں آپ؟ خیبر پختونخوا کے کون ہیں؟ وہ اسلام آباد سے ہی جاتے ہیں, ہمارے جائی صاحب جاتے ہیں یا شریف ورک صاحب جاتے ہیں. اور پنجاب سے؟ پنجاب میں بھی, پنجاب اور فرنٹیئر یہی ممبر ہیں پھر؟ جی 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 5 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں جی. ہاں 4 ہو گئے جی بالکل. Are they paid or are they voluntary work? سر پے ہوتا ہے سر, پے کرتے ہیں سر. اب جو ہائی کورٹ کے ججز ریٹائر ہیں ان کو ہائی کورٹ کا پیکج جو ہوتا ہے وہ ملتے ہیں. اچھا, تو وہ تو ان کو پینشن ملتی ہے ویسے ہی. پینشن تو لیتا ہے نا سر. نہیں تو جو سپریم کورٹ کے ریٹائر ہیں ان کو سپریم کورٹ کی تنخواہ ہے, جو ہائی کورٹ سے ریٹائر ہے ان کو ہائی کورٹ کی تنخواہ. یہی ہے ان کو کیوں ملتی ہے تنخواہ؟ پینشن کے علاوہ. کیوں کیا جواب؟ نہیں مطلب سمجھ نہیں آ رہی بات. ہاں جی, یہ اٹارنی جنرل صاحب سے ان کا پیکج تو وہی ہوتا ہے نا جو وہ لاسٹ سروس کر رہے ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of a news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up the presidential order related to the terms and conditions of judges. تھوڑا سا زور سے بولیے. I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, whether post-retirement can they, if they are required to do any work. آپ جو بات کر رہے ہیں, this is a common practice. کوئی بھی ریٹائر ہوتا ہے جب نئی جگہ جاتا ہے اس کو وہی پیسے ملتے ہیں. ہائی کورٹ سے ہے تو ہائی کورٹ کی ہے, ایملمنٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے. This is an addition to the pension. So I was not. No, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, that's what they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is, because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But it's a government assignment, then you're not paid for that. That is part. کون سا آرڈر ہے یہ؟ تو کہہ رہے ہیں ان کا بڑا بجٹ بھی ہے. یہ کون سی منسٹری کے نیچے آتا ہے؟ انٹیریئر سر. نہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کون سی منسٹری کے نیچے آتے ہیں؟ ویسے بجٹ ہمارا تھرو انٹیریئر آتا ہے, ادروائز دوسرا انڈیپینڈنٹ ہی ہے. انڈیپینڈنٹ الگ بات ہوتی ہے, اور گورنمنٹ میں کسی جگہ تو آپ کو بجٹ جاتا ہوگا نا, انٹیریئر میں, فائنانس میں, کس میں, ہیومن رائٹس میں, لا میں, منسٹری آف انٹیریئر آتا ہے بجٹ ہمارا. ابھی ہماری ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن اس وقت کیا ہے کیبنٹ نے. آپ کو کچھ پتا ہے اس کے متعلق؟ کھوسا صاحب آپ کچھ ذکر کر رہے تھے ابھی. وزٹ بھی کیا ہے وہ,
आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा। कहाँ लिखा है आपने, आपको पता है? पिटीशन में, मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे, अच्छा, ये आसन की पिटीशन मैंने राइट की है, अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अच्छा, वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा। आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है मीटिंग वगैरह जो करते हैं बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट क्या है, स्टार बनाया हुआ, ये कौन से केसेस जो क्लोज हुए हैं रजिस्ट्रार साहब? क्या आपको ये अपॉइंट कैसे हुआ है? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 in 2011. Never. जी वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार, आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी। वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 था 134 of which file? ये है। My lord, I have this copy of the notification. हमारे पास है। कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का। दे दे दोनों 161 देना, मुझे देना जरा। उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजेट नोटिफिकेशन है। मेरी जो जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011 dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Baluchistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Virk, IGP, retired Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. 2. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था कंडीशन, प्लस कर दिया है to trace whereabouts 30 into, वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे। अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's I mean there's only this commission will have its says that independent secretariat with auxiliary staff, that's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए। I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं। Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam जो कि 136 persons and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है 2011 में। नहीं, tell us. आप हमें बताएं जरा, ज़बानी बताएं। Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी जी. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed by Faez Musharraf. He was illegally removed by Faez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath.
Achha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप index ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि individual cases के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या recommendation हुई, उस पे क्या compensation award हुई, वो इस report में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where? Page? Sir, if your lordships may kindly see. Report confidential थी, ये public कब हुई है? Sir, ये फिर public तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी report में लिख रहे हैं कि confidential report है. The copies, कौन सा? Sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant padhe? Ji. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that the special bench be constituted to supervise the proceedings before the commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में sir. Production orders were issued by the commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the commission to such special bench for perusal of the honorable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters / cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so and so, which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case / cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall
also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. So this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission... But without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence hota hai. Now, the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. ये 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी, अब 2024 में इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 production orders have been issued to the relevant agencies. Only 51 have been complied with. If your lordship may kindly see एक production order जरा page 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing, that's the problem with the Commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस ये. सर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. इनको मार करके दिया है मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टेरिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए, तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सर पूरी नहीं है, मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ. मैंने पूरी रिपोर्ट पेज 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet Commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. Have a look at the production order. जी सर. मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ. ये सैंपल के तौर पर मैंने लगाया. My lord. हाँ तो वो ये कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है. सही बात है. तो इसका क्या हुआ फिर? सस्पेक्ट है ना, कुछ सस्पेक्ट करता है. If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers of contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And those powers were ever exercised. Object is not to send people to jail. No, but the object is to, if the people are illegally detained, to set them free. वो तो बात की बातें हैं. Well, I'm just punishment में हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. That's right, sir. अगर हम punishment में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the Commission what happened. I mean, this is 2020, 10 December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government
because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is, but it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ye sare production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and then you can submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने है, 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord the Chief Justice, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट। आप बताएं, आप जरा माइक अपनी तरफ कर लें। जी, ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा, हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उस पे उसी पे अटके हुए। मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ। इसमें कौन सा है? ये पेज 29। अब नंबर, अच्छा नील, सर नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20, हाँ मिल गया जी। उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रोपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है। ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर देयरफॉर अर्जेस दिस ऑनरेबल कोर्ट टू सेट अप एन इफेक्टिव एंड पर्पसफुल कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स conferred upon this honorable court and Article 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party, PLD 2012, Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. We are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं, उसकी वजह यह है, ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर, विद रिस्पेक्ट।
Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो कुछ कर सके. आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे. फिर आपका एतराज यही होगा कि जी क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है. तो वो नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है. तो ये जरूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियां आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले. ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम. सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ बस यही काम करो. सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम. आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को. जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर. मैं और क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया तो अब आपकी हुकूमत है, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में. मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर है जी. अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार, सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीज़ें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है. कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहता है यार ये क्या मुझे काम करना है मुफ्त में, ठीक है. तो वो भी देखें हम, ये बर्डन हम प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें. आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में. फिर वो कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं. फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें. तो ये इसमें जरा सा हम देखें इत्तेज़ाज़ साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है. देखिए वो 2 किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें. और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द पाकिस्तान बार काउंसिल, presidents of the 4 provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देखेंगे the mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शन कंपटीशन में हो जाएगा. वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना वो तो उनका काम है, नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना. जी सर. चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन. आप ये 2 देखें, डायरेक्टर जनरल sorry to interrupt. ISI. एक सेकंड, sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो scheduled at 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है. We don't want to. We are taking this case seriously.
یہ ہم اس کو کل فل کورٹ تو نہیں, وہ بینچ تو نہیں, 11 بجے لارجر بینچ ہے. پی ایف یو جے کو بھی میں نے اس میں پی ایف یو جے اینڈ 2 senior officers, senior most officers of the inter-services intelligence and the IB. وہ تو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کریں نا, کمیشن وہ لیٹ دی اٹارنی جنرل ٹیک سم انسٹرکشنز اینڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نوٹیفائی کریں. اٹارنی جنرل آپ ایسا کریں, آج we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday ko hum ne bhi koi rakha na case, kya rakha tha? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. Salahuddin, hold, thoda sa ruk jaiye. Monday ko kuch aur hai? There is presidential reference on Monday. Tuesday ko kya? Yes. بینچ کنٹینیو کر دی تو ٹیوزڈے کو کر لیں. اس سے نہیں پتا ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہاں جا رہے ہو, چھوڑنا چاہتے ہو؟ کمال. اچھا آپ ایسا کریں, کم اپ with some practical suggestions, talk to Mr. Faisal Siddiqui, take these production orders, بلکہ ہم آرڈر ڈکلیئر ہی کر دیتے ہیں, لکھیں. سوری صلاح صاحب, آپ اس کیس میں Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. جی صلاح صاحب ہم نے withdraw کر لی. These appeals have been withdrawn. اچھا یہ بتائیے, وہ جو کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس نے کیا کام کیا؟ وہ آرڈر ریویو ہو گیا کیا بعد میں؟ That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. نہیں, it was headed by کیا نام ہے, صادق سنجرانی. نہیں sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں, انہوں نے اپنی رپورٹ ایک فرنش کی ہے سر. وہ کدھر ہے؟ Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. اچھا, The report was furnished and it is on the اس میں record. لکھیے وہ آفس کون ہے, اسٹینو کہاں ہے؟ یہ ریکارڈ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی نمبر, اس کو نمبر کر دیتے ہیں. اعتزاز احسن آپ کی ایک ہے 161 ہے, اور یہی ہے نا؟ خوش دل خان کی ہے 124. سب سے پہلا کیس گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اور یہ ان کی اپیل ہے خوش دل خان کی. ان کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کہنا چاہنا ہے. یہ تو ان کی آپ کو اگلے دن سنا تھا, ان کی تو کچھ ذاتی مسئلے ہیں, لیکن ہم ذاتی مسئلے نہیں سنیں گے اس کیس میں. یہ آتے ہیں, بتائیے. تو ہم ٹیوزڈے کو اس کو رکھیں گے, اینڈ وی وانٹ یو ٹو, وی ول ڈائریکٹ دس کمیشن ٹو پرووائڈ یو ود دی انفارمیشن, and you can seek any further information from them, what became of the production orders, and they have to submit a comprehensive report. My Lord, if maybe given a little more time, because if they can share the production orders with me, let's say by tomorrow or day after, it might need a few days to get the report from the concerned agencies on each of the production orders. As I understand, there are about 700 of those. Over 700 of those, so it might require a little more time. CM appeal. All these matters pertain to, shall we keep your matters pending or shall we, آپ کی بھی 3 ہے نا, 1 2 3. جی مالٹ یہ withdraw کر دیں. 4. جی مالٹ withdraw کر لیں. نہیں, ان سے پوچھنا اٹارنی جنرل سے. جی my Lord, the instructions are to withdraw them, sir.
The government of Pakistan, which means that the orders will revive. My lord, the orders were complied with. The Islamabad High Court's order on the basis of which the commission was constituted, that commission was constituted, the commission has furnished its report. So these petitions have become CPLA infructuous. 1503, 1504, 1505 and 4333. नहीं वो उन तीन का लिखें 2022, CPLA 4333 2021. पहले वो वाला लिख दें 2021 का. Learned Attorney General states that he is under instructions that through these CPLAs, orders passed by the Islamabad High Court were assailed. Full stop. Learned Attorney General states that he is under instructions to withdraw these petitions. Full stop. And further states that the orders have been implemented, and further states that the orders impugned therein have been implemented, and that he will be filing a concise statement in this regard. Full stop. Accordingly, these petitions are dismissed as withdrawn. However, Learned Attorney General to file concise statement as stated. Next paragraph लिखिए. ये इनका पहले लिखें. मेरे ख्याल में अब ये जो इनका नाम है आमना जंजुआ साहब का पहले, आमना मसूद जंजुआ साहिबा का नाम लिखें. मिस लिखें या मिसेस लिखें आपके लिए, या मौसमात लिखें. MRS. Okay, MRS आमना मसूद जंजुआ एक केस में लिख दें. States that her husband, Mr. Masood Janjua, was disappeared on 30th July 2005 when he was to travel from Rawalpindi to Peshawar. Yes, my lord. And has not been heard ever since. And that she is not, and that she had approached the commission. क्या नाम है इसका? Commission on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. Commission of Inquiry on Enforced Disappearances. किधर था अभी पेज आपने बताया था? Notification. पेज बताया था ना 220 क्या था? 131. आपने किसी ने बताया था? 131. हाँ? 131. 131. वो तो law है. हाँ ठीक है. Had approached the Commission of Inquiry with an E on enforced capital E, capital D disappearances, which was notified by the government of Pakistan, by the federal government, but is not satisfied with the working of the Commission. First off, others present, the Commission comprises of, we are informed that the Commission comprises of the following: Mohammad Sharif Virk, the chairperson is Javed Iqbal Sahab. Yes, ma'am. The chairperson of the Commission is Mr. Justice Retired Javed Iqbal, Mr. Justice Retired Amanullah Yasin Zai, Mr. Justice Retired Zia Parvez, and Mr. Mohammad Sharif Virk. As members लिख दीजिएगा, उनका chairman लिख दीजिएगा. And however, she is not satisfied with the working of the Commission. The other petitioners too have expressed their reservations about the effectiveness of the Commission. ब्रैकेट में उसको एक दफा कमीशन करके ब्रैकेट में उसको कमीशन कर दीजिएगा. ठीक है, उसके ब्रैकेट में कमीशन. Mr.
खालिद नसीम, आप सेक्रेटरी हैं, रजिस्ट्रार हैं? रजिस्ट्रार सर। Registrar of the commission, however, states that the commission has done considerable work and a number of persons, and due to its workings, a number of persons have been recovered / returned home. Full stop. इनका लिखने civil miscellaneous appeal number 161/2023. The registrar of the Supreme Court had raised objections on the maintainability of a constitutional petition filed by Mr. Etizaz Ahsan. Full stop. The petition refers to petition also attends to the matter of missing persons. Full stop. As we have already taken notice of the petition filed by Mrs. Amna Masood Janjua, and to the extent that the petition filed by Mr. Etizaz Ahsan attends to the case of missing persons, the office objection overruled. Let the office is directed to number the petition. इनका खुशनी खान का करेंगे ना तो गाड़ी कर देंगे ना फोन के उसी ये करेंगे तो अभी नंबर कर देंगे उसको लाओ उसी पर रखें नंबर करेंगे तो फिर इंडिविजुअलिटी का इशू है ना आप उसको उसी बुनियाद पर उड़ाएंगे ना कि तुम्हारा तो पर्सनल इशू है मिस्टेक बनने का उसको दिन समझेंगे पर्सनल मेंटेनेबिलिटी नहीं होता देख लो. अच्छा ठीक है तो अच्छा फुल स्टॉप. The Secretary of the Commission. Similarly, another petition has been filed by Mr. Khushdil Khan Malik, but the same was also but in respect of the same office objections also raised, and he has filed CM appeal number 124/2022, which has raised a number of issues. However, we restrict the matter to the case of missing persons and if the other grievances raised therein, some of which are personal, will not be attended to. Full stop. And the office is subject to our observations in this regard. इत्तेज़ाज़ साहब और आपका भी यही होगा. वो वाले केसेस हम नहीं अटेंड करेंगे. Missing/enforced. नहीं वो वाले केसेस जो है ना वो हम नहीं अटेंड करेंगे. आपको बता रहे हैं अभी से. हम मिसिंग पर्सन पे फोकस कर रहे हैं. इनका भी लिखने to be numbered. That is not, as I submitted, that is not just an individual case. Or individual cases, they set and establish a pattern. And that pattern is the one that your Lordship has to address. It's similar fact evidence. I know, I'm very cognizant of our jurisdiction. We are exercising jurisdiction, habeas corpus jurisdiction. If a person comes home, habeas corpus finishes, then that doesn't mean you don't have a remedy. Then your remedy can be a criminal case, your remedy can be tort, your remedy can be a suit for damages, but the Supreme Court's powers end on habeas corpus, the same power Supreme Court exercises as in Article 199. So the person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there. And we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. हम चाहते नहीं है ये सारा लिखें, अगर आप चाहते हैं हम लिख देंगे. देखिए उनको भी हमने खुशदिल खान को भी रोक दिया है और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इशू पे. अगर हम इतना डाइल्यूट करेंगे तो हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे और कोई और काम भी नहीं कर पाएंगे. तो फोकस हम यही रख रहे हैं. पर्सन का ब्रॉड स्कोप है. अगर आप इससे मुतमईन नहीं, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे.
پھر ہم آپ کا نمبر نہیں ڈالتے ہیں آج, پھر ہم آپ کو لمبی سنیں گے, پھر فیصلہ کریں گے. میں کیونکہ عرض کر رہا ہوں ہماری میٹنگ ہے. جی سر, میں تو آپ کریے عرض. جناب فرماتے ہیں تو میٹنگ نہیں ہوتی, میرے ہوتے مجھے نیکسٹ ڈیٹ پہ 2 جملے تو عرض کر لیں. چلے کریے. میرا جو معاملہ ہے یہ انڈیویجول یا ہیبس کارپس کا نہیں ہے, یہ آپ کو بتانا ہے ایک پیٹرن نیا شروع ہو گیا ہے آف کمیٹنگ اے کرائم وچ یو آر کنسرنڈ ود ان دی براڈر پٹیشن. یہ ایک پیٹرن کو, ایک ڈیزائن کو ایڈریس کرتا ہے. دیز انڈیویجولز ایز سچ ڈونٹ میٹر کہ کوئی ان میں یہ ڈار تھا یا کوئی فرق حبیب تھا یا کوئی. اٹ از دی نیو موڈ آف tackling. What basis are you saying this? سر وہ میں نے ایگزامپل Are you dar? No. Are you his lawyer? No. I am Then here. On what basis are you saying it? In public interest. No. In public interest. 4 لوگوں کے نام پبلک انٹرسٹ میں آ گئے. سر 4 لوگوں کے نہیں ہے یہ. 4 لوگوں کے آپ نے نام لکھے. 4 لوگوں کے نہیں, وہ 4 سے زیادہ ہے ویسے, but they establish a pattern. 4 people. Of very not 4 sir, there are more than 4. آپ پڑھ لیتے ہیں ابھی آگے پڑھ لیں. آگم اور بھٹی 2 تو یہی ہے. Asked the Attorney General to seek proper instructions, and he has already given a statement that let him take the instructions and submit the report on which whether the persons are being arrested or not in accordance with the law or without due process of law or against Article 4 of the Constitution. وہ تو دوسرے کیس میں ہم نے کیا ہے. نہیں, وہ تو دوسرے کیس میں کیا ہے. نہیں, میرے کیس میں بھی یہ رپورٹ دے دیں. وہ دوسرا کیس تھا, وہ تو وہ والا تھا, وہ کنٹمپٹ والا. اس میں تو نہیں کیا, وہ دوسرے کیس میں. My lord, it was in this case. Huh? It was in this case. اسی میں ہی تھا. نہیں, وہ والا کیس, وہ جو کنٹمپٹ والا تھا, نوٹس ہو گیا نا وہ. ہاں, اسی میں تھا. اسی بلوچ مسنگ پرسن. لانگ ڈے, بٹ وہ یہ پیج 6 پہ بلوچ مسنگ پرسن. چلے ہم یہ بات بھی دیکھتے. اچھا, وہ اور کیا رہ گیا تھا. دی کمیشن از ڈائریکٹڈ ٹو سبمٹ comprehensive report should and provide copy of the same to the learned Attorney General, including all production orders issued by it, and the learned Attorney General to submit report if the said production orders have been complied with, and if not, why not. ٹھیک ہے, پھر ہم باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے. کمیشن ہمارا ہو رہا ہے 3 بجے سے, آپ بھی تو اس میں آ رہے ہیں نا ہمارے سامنے. کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو ہم اس کو بتائیں کتنا ٹائم دیں آپ کو, کیونکہ پھر آپ دیکھ لیجیے ان کی کچھ انگزائٹی اور کمیشن وغیرہ آپ دیکھ لیں. اف یو آر سیٹسفائڈ ود دا ورکنگ آف دا کمیشن اور ناٹ, وہ جب رپورٹ آپ کو دیں گے اس سے باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی, پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی آپ ہمیں ڈیٹ سجیسٹ کر دیں. تو اب ایک ان سے پوچھتے ہیں. دوسری بات, ایک ہم نے جو نوٹس لی تھی, مگر انہوں نے کہا تھا, مگر انہوں نے دے ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ. سوری, برا نہ مانے شعیب شاہین صاحب, ہم نے کہا تھا جی یہاں سے جو لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, انہوں نے کہا میں لا رہا ہوں پٹیشن, میں امینڈ کر رہا ہوں اس کو. انہوں نے نہ لائے پٹیشن اور نہ امینڈ کیے. اگر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ان کا بنیادی حقوق ہے. اگر وہ کوئی ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو دھکے مار سے, ڈنڈے مار سے ان کو اٹھایا جائے. نہیں, ان کو بہت رسوا کر رہے ہیں, بہت رسوا کیا ہے. ایک سیکنڈ سر, آپ نے تو نہیں لیا ہے نا, انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کریں گے, نہیں کیا انہوں نے پورا وعدہ. ہم اب اپنے طور پہ کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دیس سارٹ آف ٹیکٹکس employed by a responsible state. If someone wants to protest, let them protest to their heart's content. But you cannot just bundle, unless they are taking the law into their own hands, destroying public property or doing something violent. They have a right to protest. That right to protest must not be in any manner curtailed, let alone by force. Absolutely.
That's the fundamental right. We may just add things in the thing. So now we have to go to the commission. Now we just propose a date. How much time do you want? No, my lord, if you, can we appoint Mr. Faisal Siddiqui as amicus in this case? Of course. Huh? Of course. Mr. Faisal Siddiqui? Always. You are already appearing for someone or not? No. I'm amicus in all these missing person cases before the Islamabad High Court. That is why I had this. The amicus has to foot his own bill. ये बलोच जो यहाँ आए हुए हैं ना जी, just मैंने visit किया, sir, it is a pathetic state of तकरीर ना करें, कागज का टुकड़ा लाइए, फाइल कीजिए पिटीशन. वो मिस्टर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट who is present in court and has rendered assistance is appointed as amicus to assist with the case. Whenever this case is fixed, his travel and staying costs will be borne by the government of Pakistan. Travel and staying costs, that's all. No fees. अच्छा, इसमें ये डेट कौन सी दे रहे हैं? ये बताइए अटॉर्नी जनरल, what will be a reasonable time? My lord, if the commission can give. ये आपको देंगे, कितने दिन में आप दे सकते हैं पहले बताएं. इनको ये पूछ लेते हैं इनसे. खालिद साहब, आप कितने दिन में इनको दे सकते हैं? ताकि वहाँ खालिद साहब, कितने दिन में आप इनको दे सकते हैं? कुछ आइडिया दे दें, टाइम दे दें 2-3 हफ्ते. आपको कितने दिन में इनको कम से कम 3 हफ्ते दे दें, क्योंकि हमारा स्टाफ है नहीं. बात कर रहे हैं यार, एक रिपोर्ट भी नहीं है हमारे पास ना. नहीं 2-3 हफ्ते में क्या है, जल्दी काम है. 8-10 दिन में कर ले, 8-10 दिन मैक्सिमम. कितने सर, कितना टाइम? 10 days. 10 to 15 days देते फिर सर. 10 to 15. Within 10 days. ये 10 days में आपको देंगे, फिर आप कितना टाइम लेंगे? So if they can share production orders in, let's say, within 10 days. Share production orders जल्दी share कर ले. Report इन्होंने 10 दिन में देनी, production orders 2 दिन में आ जाएंगे. आप हमें, the case can be listed, let's say, after 2 weeks. 10 days के बाद 2 weeks. No, 2 weeks from now. ठीक है, फिर हम डेट तक लिख लेंगे. अपना जरा देख लेंगे कोई प्रोडक्शन ऑर्डर्स मैं इनसे ले लूंगा 2 हफ्ते में. Preferably, Mr. Faisal Siddiqui, if your lordship may just mention that the report which is to be submitted before this court on production orders must be on each of the cases. Yes. ये कोई general report. No, we don't want numbers. ये आप हमें नाम देंगे सबके, बल्कि इनको देंगे ना. सर, एक गुजारिश और है सिर्फ जी, वो ये है, वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का करते थे कि मंडे अगर फिक्स करने लगते थे कोर्ट, तो वो कहते थे मंडे ना, ट्यूसडे का. उनसे पूछते थे जब जज साहबान कि व्हाई नॉट मंडे, तो वो कहते थे केस तो पता नहीं चले ना चले, पर संडे खराब हो जाएगा. तो ट्यूसडे. ऐसे ये बताइए एतजाज साहब, आप हमारे सामने कभी आए और आपका केस ना चला हो? नहीं. एक एग्जांपल देते हैं. नहीं, अगर नहीं चला तो आपकी एडजमेंट की दरखास्त आई हुई होगी. हमारी तरफ से हम पूरा बोर्ड खत्म करके जाते हैं. अब आप देख लें 3:30 बजे, ठीक है. अगर आज हम आपको देर तक सुनते हैं, मगर आज हमारी JCP की मीटिंग है, वेरी ग्रेटफुल, 3 बजे रखी हुई है. अदरवाइज वी ट्राई टू फिनिश द बोर्ड, एटलीस्ट आई ट्राई टू ह्यूमनली पॉसिबल. वन ऑफ आवर कोलीग्स इज नॉट वेल, she is seriously unwell and she's come and sat in court. चलें, के बारे में सिर्फ एक बात करनी थी, बलोच प्रोटेस्ट के बारे में. चलें, सिर्फ एक बलोच प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करनी थी. उन्होंने ये कहा कि जी जो पिटीशन पेंडिंग है हमारी, वही रिक्वेस्ट करें. आपने कुछ नहीं फाइल किया, मगर हमने अटॉर्नी जनरल को ऑलरेडी कर दिया है. ही इज सो फार रिस्पॉन्स. Welcome back to the 387th episode of Thought Behind Things. Today is the 1st of December 2023 and आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं all the way from Germany, जिनका जो सबसे मज़ेदार बात ये है कि he actually built a startup that he sold to Meta being the company जो Facebook को own करती है. Originally they were called Facebook, now they're called Meta. और जर्मनी की ये, if I understand this correctly, this was the first acquisition for Meta in Germany. Definitely the first and probably the only one for a Pakistani. और जो जर्मनी का हेडक्वार्टर्स है मेटा का, वो इन्हीं की कंपनी से फिर इवेंचुअली बना. इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी. बिफोर एक्चुअली गोइंग टू जर्मनी एंड बिल्डिंग दिस स्टार्टअप, ही एक्चुअली डिड ए मेडिकल स्टार्टअप इन पाकिस्तान, जिसके लिए ही वेंट टू स्टैनफोर्ड एज